source. It is all past CAT questions that we'll be solving. The focus in these workshop sessions will be on solving problems. So we will not be discussing too much of basic theory in these sessions. It is impossible to discuss all the basic theory and then solve questions. We are doing multiple chapters together. So the focus will be on problem solving. So if you have any questions, you can always ask doubts, but otherwise try to follow along. You must have done the basics of these topics already. Now, if you have any doubts, you can always unmute your mic and ask your doubts. Otherwise, if you want to use the text or chat feature, then use the public chat. You can ask questions on public chat, which I'll be able to see while taking the session. If you send me any private messages, I will not be able to see that while taking the session. So use public chat for sending questions. Okay, sure. So with all this things cleared, let's start with the session. So arithmetic is a very important area tested in all aptitude exams, including CAT. CAT में भी काफी सारे questions आते हैं arithmetic के. So arithmetic is 7 chapters. We already have discussed questions from 3 chapters of arithmetic. The first 3 chapters in your study material, that is ERPV, equations, ratio, proportion, variation, and PPL, percentages, profit and loss. So those 3 chapters, we had discussed questions in the first arithmetic session. In the second arithmetic session today, we'll be focusing on these 3 chapters. Chapter 4 from your study material, simple and compound interest. Chapter 5, time, speed and distance. And chapter 6, time and work. In fact, time, speed and distance will not be able to complete all the question models today. So time, speed and distance will continue into arithmetic part 3. So arithmetic part 3 भी एक होगा, जिसमें होगा time, speed and distance and average mixtures allocations. So those topics will be discussed again in next third arithmetic workshop. Okay. So today focus will be on simple compound interest, time and work first, and then some questions of time, speed and distance we'll discuss at the end. Okay, so let's start. So as I had displayed last time, for the first 3 chapters, these are the breakup of questions in the next 3 chapters, that is time, speed, distance, time and work, and average mixtures allocations. So these are the breakups for the last 4 years that I'm going to display. CAT 2024, 23, 22, and 21. So last 4 years CAT papers, I have performed the analysis, and these are the number of questions slot wise from these topics. So starting from the immediate past year, 2024, you will see last year there was consistency in all the 3 slots. The number of questions did not change at all. All 3 slots had a consistent number of questions from these topics. So time, speed, and distance, there was one question in every slot last year, morning, afternoon, evening. Similarly, time and work, one question in every slot, morning, afternoon, evening. And average mixtures allocations, AMA, were two questions in every slot. So overall, 5 questions per slot. AC, I will try to go fast. Okay. So there is a request already to go faster. So let's quickly go through this. So CAT 2023 already this breakup is displayed. So those who want to take screenshot of this, quickly do so. This is for the next 2 years, 2022 and 2021. So if anyone needs breakup of these 3 chapters for 22 and 21, quickly take the screenshot. Please keep your microphones on mute. Those who don't want to ask any doubts, keep your microphone on mute. Anurag Kothari, keep your mic on mute. Done? Okay. So now let's start with the first chapter for today's session, which is simple and compound interest.
Now questions based on both simple as well as compound interest appear on the CAT exam. Okay, so it's not just to compound interest questions. Last कुछ साल में आप देखोगे simple interest के questions भी regularly पूछे गए हैं. So let's quickly discuss idea of simple interest. Now, the basic concept of simple interest is every year the interest is the same. So every year you get the same interest. And how much it is? R% of P. So every year आपको same interest मिलेगा. Whatever is the rate, उतना percent of the principal. So R% of P is the interest that you get every year. So now if you want the interest for 2 years, you will take this number and multiply it with 2. So R% of P into 2 will give the interest for 2 years. For 3 years, it will be this number into 3 and so on. So if you want the interest for n years, it will be R% of P into n, which will become PNR upon 100. So this is nothing but R% of P into the number of years n. Now, if you want the amount under simple interest, amount is interest plus the principal. So this interest plus principal, and can pull out P common and you'll get 1 plus NR by 100. So this is the amount under simple interest. Next, let's discuss the basic idea of compound interest. So now in compound interest, what happens is your money keeps on growing by R%. Whatever is the rate of interest, the money will keep on growing by that much percent. So whatever is the principal, that principal, if you increase by R%, you'll get the amount after 1 year. That amount after 1 year, if you further increase by R%, you'll get the amount after 2 years, and so on. So whatever is the rate, by that much percent your principal keeps on growing. So year after year, there is a percentage increase that happens. Now we have seen that R% increase, whenever you're increasing something by R%, there's a multiplier of 1 plus R by 100. 10% बढ़ाना मतलब 1 plus 10 by 100 से मल्टीप्लाई करना, दैट इज 1.1 से मल्टीप्लाई करना. 20% बढ़ाना है तो 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं. दैट मल्टीप्लायर इज 1 plus R by 100. So for R% increase, this will be the multiplier. So if you want the amount after 1 year, you have to use this multiplier once. If you want the amount after 2 years, you'll have to use this multiplier twice. So if you want the amount after n years, the amount will be given by principal into this multiplier applied n number of times. So 1 plus R by 100 raised to the power n. So this is your amount formula under compound interest. And then the compound interest itself will be the amount minus principal. So from this amount, if you subtract out the principal and pull out P common, it is P times 1 plus R by 100 raised to the power n minus 1. So this is your compound interest formula. Okay. Now in compound interest, is the interest same every year? No. Okay. Compound interest में interest itself keeps on growing by R%. Okay. तो जो आपका R% का ग्रोथ है वो सिर्फ अमाउंट में ही नहीं, वो इंटरेस्ट में भी ग्रोथ आता है. तो आपका जो पहले साल का इंटरेस्ट होगा, वॉट एवर इज द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, दैट विल इंक्रीज बाय R% to give you the interest for the second year. That further will increase by R% to give interest for the third year, and so on. Okay? So compound interest में the interest itself keeps on growing by R%. Simple interest में every year interest is same. Compound interest में there is a growth in the interest. Okay. Now, in compound interest, sometimes
interest is calculated multiple times in a year. So if the interest is calculated multiple times, let's say k times per year, तो फिर अमाउंट का जो फॉर्मूला है, it gets modified like this. It becomes p times 1 plus r by k by 100 raised to the power n into k. So if you're compounding multiple times in a year, where that k tells you how many times per year interest is being calculated, then this is the modified formula for compound interest. Okay, so that 1 plus r by 100 जो था वो r divided by k by 100 हो जाएगा, and the power n जो था वो हो जाएगा n into k. So for example, if you are doing compounding twice in a year, half yearly compounding अगर है तो इसमें k को 2 लेना है. अगर quarterly compounding है, quarterly compounding means k will become 4. तो So let's see a few questions of CAT 2022, 23, 24, last 3 years papers based on simple compound interest. So this was last year's slot 1 pick question. Try this out, go through this. These questions are not necessarily difficult, but the thing is that जो CAT में पूछते हैं उसी level के questions हम करने वाले हैं. Going for something which is way beyond what is tested on CAT doesn't make much sense. These are the kind of questions that get tested on the CAT exam. So nothing very difficult as such. ध्यान से पढ़ो question, try it out. This was last year's slot 1 question. Okay, so let's see. An amount of rupees 10,000 is deposited in bank A for a certain number of years at simple interest of 5% per annum. Okay, let's say that number of years is n. Okay, हमारा final question वही है, that investment period in years in bank A has been asked. So let's say that number of years is n. So bank A, there is simple interest for n years, rate है 5% per annum. जो प्रिंसिपल डिपॉजिट किया था वो 10,000 है. फिर कहा है ऑन मैच्योरिटी the total amount received is deposited in bank B for another 5 years at simple interest of 6% per annum. अभी ये बैंक ए से जो अमाउंट मिलने वाला है वो बैंक बी में डिपॉजिट करना है. तो अभी यहाँ पे कितना अमाउंट मिलेगा, तो पहले तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा. We know rate of interest है 5% per annum. So एक साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा will be 5% of 10,000. 5% of 10,000 will be 500. So एक साल में इंटरेस्ट अगर 500 है, in n years it will become 500n. So don't bother about substituting in the formula and all those things. Just quickly logically सोचोगे r% of p हर साल मिलेगा. So 5% of 10,000 will be 500 every year. And if it is 500 every year, in n years इतना इंटरेस्ट मिलने वाला है. So यहाँ पे जो अमाउंट बनेगा will be 10,000 plus 500n.
इतना ये अमाउंट है. So now this amount is deposited in another bank B. For 5 years at simple interest of 6% per annum. यहाँ पे भी simple interest है, number of years है 5, rate है 6% per annum. And then they have said, if the interest received from bank A and bank B are in the ratio 10:13, find that n, that number of years in bank A. ये आपको पूछा है. तो अभी यहाँ पे जो simple interest मिलने वाला है will be this principal, which is 500n plus 10,000 deposit किया as a principal into सिंपल इंटरेस्ट 5 साल के लिए 6% के रेट से, तो इतना आ जाएगा वो बाय 100. You can pull out 100 common from this bracket and cancel with the 100 in the denominator, leaving 5n plus 100 into 30. Okay, 100 cancel हो गया. And now this ratio of the simple interest we know is 10:13. So simple interest from that first bank was 500n, and from the second bank it is 5n plus 100 into 30. And this ratio is given by 10 as 10/13. And simplify to get the n value. Yes, all of you correctly got the answer 6. Good. Okay, so when you cancel out all these zeros, and then when you cross multiply, you will get 65n is equal to, when you open up this bracket, it will be 15n plus 300, giving you 50n is 300. So n is 6. That is the answer. Option C, 6. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है ना. सो कैट के क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं वगैरह ऐसा कुछ सोचो मत. Identify such kind of questions and solve. So those who want screenshot of this slide, quickly do so. Done. This is the second slide. Next, this is CAT 22 slot 3 question. Try this out. Okay, are you able to solve this question? Karan is saying 800. Okay. ठीक है. Others also have confirmed 800. Yes. Good. Let's go through this question number 2.
Another simple interest-based question. Neetu has an initial capital of 20,000 rupees. Out of this, she invests 8,000 at 5.5% in Bank A. So Bank A में जो principal invested है वो है 8,000. Rate of interest है 5.5%. Then 5,000 rupees at 5.6% in Bank B. So second Bank B, the principal is 5,000. Rate of interest is 5.6%. The remaining amount at X% in Bank C. So all the remaining amount goes in Bank C. So we know initial capital है 20,000. तो उसमें से 8,000 A में है, 5,000 B में है. 8 and 5 is 13,000. So the remaining amount will be 7,000. So that goes in Bank C at X% rate. Each rate being simple interest per annum. A combined annual interest from these investments is equal to 5% of the initial capital. So ये तीनों investments से जो उसका interest है. Please keep your microphone on mute, Nishika. Nishika, keep your microphone on mute. Sorry. So ये अभी तीनों से मिलके जो interest total है, it is 5% of the initial capital. Now we will take 5% of the initial capital. What is 5% of 20,000? So 10% हो जाएगा 2,000. So 5% उसका आधा 1,000. So जो total SI मिलना है तीनों से 5% of 20,000 हो गया 1,000. Nishikant, please keep your microphone on mute. So now, from the first Bank A, how much is the interest earned? 5.5% of 8,000. सब बैंक में एक साल के लिए पैसा रखा हुआ है. So पहले बैंक से जो इंटरेस्ट मिलेगा will be simply 5.5% of 8,000. So that will be 5.5 into 80 or 55 into 8. 55 into 8 कितना हुआ? 440. वैसे दूसरे बैंक से जो इंटरेस्ट मिलेगा will be 5.6% of 5,000. So 5.6% of 5,000 जब लोगे will be 5.6 into 50 या 56 into 5. 56 into 5 हो गया 280. So to get total interest of 1,000, the remaining interest that you have to get from C, वो कितना होना चाहिए वो निकाल सकते हैं. So 440 plus 280, that adds up to 720. So to reach total 1,000 interest, यहाँ पे interest होना चाहिए 280. अब वो 280 इंटरेस्ट मिला है 7,000 रुपए पे. 7,000 पे 280 मतलब इधर रेट क्या हो गया वो हम निकाल सकते हैं. तो दिस रेट दैट X% must be 4%. 7,000 का 1% होता है 70. तो ये 280 मतलब 4% मिला हुआ है. So this rate must be 4%. So once you know the rate is 4%, now the question is done. So if she had invested her entire capital in Bank C alone, सारा पैसा अगर Bank C में इन्वेस्ट किया होता तो फिर एनुअल इंटरेस्ट इनकम कितना मिलता? तो सारा पैसा अगर 20,000 रुपीज सारा बैंक सी में इन्वेस्ट करोगे, 20,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है? दैट विल बी 800 रुपीज. दैट इज द आंसर, ऑप्शन डी, 800.
स्वाति 4% हमें रेट कहां से मिला? हमें पता है कि टोटल इंटरेस्ट तो 1000 होना चाहिए, टोटल इंटरेस्ट इज 1000, बैंक ए से इंटरेस्ट 440 है, बी से 280 है, मतलब सी से भी 280 होना चाहिए तो गेट टोटल 1000। वो समझा? हाँ, तो अभी हमें पता है बैंक सी में डिपॉजिट 7000 किया था एंड उस पे इंटरेस्ट 280 मिला है, तो कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला है? 7000 का 1% वुड हैव बीन 70, 1% इज 70, तो ये 4% है 280। टोटल 1000 अगेन, 1000 मतलब वो तो आपको 20,000 रुपए पे टोटल 5% रेट है ऐसे कहा है ना। हर कंबाइंड एनुअल इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू 5% ऑफ द इनिशियल कैपिटल। क्वेश्चन में दिया है, पढ़ो ध्यान से। इनिशियल कैपिटल 20,000 है, उसका 5% इज अ टोटल कंबाइंड एनुअल इंटरेस्ट। 5% 20,000 का लेके देखो कितना आता है। हाँ हाँ कविश्री, इफ यू वांट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो वैसे कर लो, 7000 पे 280 इंटरेस्ट मिला हुआ है तो 20,000 पे कितना चलेगा? Done. So those who want screenshot of this, quickly do so. Try out question number 3. ये कैट 2021 स्लॉट 3 में आया था क्वेश्चन। This is the last slide home. Yes, anyone getting this answer? 2436. ठीक है, good. So couple of students have answered it correctly, 2436. So let's check this question. So bank A offers 6% interest rate per annum compounded half yearly. So bank A rate has 6% per annum, but is compounded half yearly. फिर दो और बैंक है, बैंक्स बी एंड सी। तो बैंक बी एंड बैंक सी ऑफर सिंपल इंटरेस्ट। तो बैंक बी सी दोनों सिंपल इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। बट द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय बैंक सी इज ट्वाइस दैट बाय बैंक बी। सो सी का जो रेट है इट इज ट्वाइस ऑफ बैंक बी। सो बैंक बी का अगर रेट हमने लिया R% पर एनम, तो सी का जो रेट है वो है 2R% पर एनम। Rate of bank C is twice of B. आगे, Raju invests a certain amount in bank B for a certain period. So राजू ने इन्वेस्ट किया है बैंक बी में, let's say for n years. certain period का है, let's say that period is n years. फिर कहा है रूपा इन्वेस्ट
rupees 10,000 in bank C for twice that. रूपा ने बैंक सी में इन्वेस्ट किया 10,000 रुपया for twice that period, मतलब 2 years के लिए. तो रूपा has invested in bank C for 2 years. और उसका प्रिंसिपल हमें पता है 10,000. फिर कहा है the interest that would accrue to Raju during that period is equal to the interest that would have accrued had he invested the same amount in bank A for 1 year. तो राजू को जो बैंक बी में n years में पैसा मिला है इंटरेस्ट, it is same as that he would have got if he had put the money in bank A for 1 year. ठीक है. So राजू को बैंक बी से n years में जो इंटरेस्ट मिला है, it is same as that what he would have got if he had put the money in bank A for 1 year. चलो चेक करते हैं. तो Raju's interest from bank B would be same as Raju's interest from bank A in 1 year. अभी राजू को बैंक बी से मिलने वाला जो सिंपल इंटरेस्ट है, लेट्स से उसका प्रिंसिपल पी है. राजू का प्रिंसिपल लेट्स से इज पी. तो राजू ने जो बैंक बी में प्रिंसिपल भी पी रखा है, उससे उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? दैट इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक बी विल बी सिंपल इंटरेस्ट PNR अपॉन 100. सो राजू का बैंक बी का जो इंटरेस्ट होगा विल बी सिंपली PNR अपॉन 100. R% का रेट है n नंबर ऑफ इयर्स के लिए. And what Raju would have got as interest from bank A. अभी बैंक A is compound interest half yearly. अभी रेट अगर 6% पर एनम है, पर एनम का रेट अगर 6% है, हर हाफ ईयर के लिए आपको रेट को डिवाइड बाय 2 करके लेना है. सो हर आधे साल में उसको 3% रेट से इंटरेस्ट मिलेगा. हाफ ईयरली का है बैंक ए में कंपाउंडिंग, तो रेट विल बिकम 6/2, दैट इज 3%. और साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलने वाला है. इवन इफ इज पुटिंग इट इन 1 year इन बैंक ए, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग मींस इंटरेस्ट विल गेट कैलकुलेटेड ट्वाइस एवरी हाफ ऑफ इयर्स लेटर. तो यहाँ पे उसको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है विल बी p टाइम्स 1 प्लस दैट रेट विल बिकम 3/100 raised to the power 2 minus 1. If you remember, this was the compound interest formula that we had seen. ठीक है. तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला हमने देखा है, उसमें अभी रेट 3% लेना है एंड नंबर ऑफ इयर्स 1 है, बट एक साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, इसलिए वो n इंटू k होके वो 2 बन गया है. So this is what you will get. Now p will cancel out from both sides and you'll get the value for nr. So nr कितना है वो निकाल सकते हैं. When you cancel out p from both sides, you'll get nr by 100. This will become 103 by 100 the whole square. Minus 1. Now when you make a common denominator of 100 square, यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में आएगा 103 square minus 100 square, the whole upon 100 square. Okay, so 100 will cancel out and you'll get nr. Now 103 square minus 100 square is of the form a square minus b square, which we know is a minus b into a plus b. So 103 minus 100 होगा 3, 103 plus 100 हो जाएगा 203, which will give us 609 by 100. तो nr का वैल्यू मिल गया है 609 by 100. Once you have found that value, final question asked is interest accrued in INR to Rupa is how much?
रूपा को कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है? हमें पता है रूपा हैज इन्वेस्टेड इन बैंक सी, वहां पे 12 ईयर्स के लिए उसने पैसा इन्वेस्ट किया है एंड रेट बैंक सी में है 2R%, तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो हम अभी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो लेट्स फाइंड आउट द इंटरेस्ट अक्रूड बाय रूपा. So we know simple interest is given by PNR upon 100 और उस रूपा के लिए प्रिंसिपल 10,000 है. We know रूपा has deposited 10,000 in bank C. So principal is 10,000, number of years 2n है, rate है 2R in bank C by 100. 10,000. And now we know this NR product is 609 by 100. So 100 will cancel out and you'll get 4 times 609 as the answer. 2436. So a slightly complicated question. You have to carefully read through all the data that is given. 3 अलग banks है. उसमें राजू ने पैसा बैंक बी में रखा है, रूपा ने पैसा बैंक सी में रखा है. रेट बैंक सी का ट्वाइस है ऑफ बैंक बी. नंबर ऑफ इयर्स रूपा का ट्वाइस है ऑफ राजू. पृथ्वी, if the interest was compounded quarterly, ये जो रेट 6 है, you'll have to divide by 4. So for every quarter the rate will be 1.5%. तो यहाँ पे वो 3 के जगह पे 1.5 आता एंड ये पावर 2 के जगह पे हो जाता 4, बिकॉज एक साल में 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होने वाला है. So here that 3 will get replaced with 1.5 and this 2 will get replaced with 4. Okay, Prithvi, got that? So those who want screenshot of this slide, quickly do so. It is given in the question Ekta half yearly. If you look at the first line itself, Bank A offers 6% interest rate per annum compounded half yearly. तो 6% per annum का रेट है, तो हर आधे साल के लिए रेट आपको 6 नहीं यूज करना है, 6 you have to divide by 2, so 3% का रेट अप्लाई होगा. ओके, सो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रहा है, मतलब हर आधे साल के लिए रेट विल बी 6/2, 3%. एंड नंबर ऑफ इयर्स 1 है एक साल में, फिर वो नंबर ऑफ इयर्स 1 है एंड इफ यू आर डूइंग कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होने वाला है, इसलिए वो 3% का रेट 2 बार अप्लाई हुआ है, इसलिए वो मल्टीप्लायर पावर 2 यहाँ पे लिया है. अनुराग, कैलकुलेशन आपको चाहिए वैसे कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है, अल्टीमेटली यू गेट द आंसर. कैलकुलेशन हाउ यू डू इट्स अप टू यू. राजू's इंटरेस्ट इन ए इज कैलकुलेटेड बाय अमाउंट फॉर्मूला. नहीं, ये इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला है ना, अमाउंट का किधर फॉर्मूला है? अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज गिवन बाय P into 1 plus R by 100 raised to the power n. This is amount. Okay, and compound interest itself is given by this amount minus principal. इसमें से जब आप principal subtract करोगे, it become P times 1 plus R by 100 raised to the power n minus 1. और ये फॉर्मूला हमने यूज किया, the interest, it is not the amount. हाँ, done. This is the third slide. Okay, next question, try this out. ये क्वेश्चन लास्ट 2 साल एग्जैक्ट रिपीट हुआ है. कैट 23 स्लॉट 1 में आया था, कैट 24 के स्लॉट 2 में, एग्जैक्ट सेम, एब्सोल्युटली नो चेंज दैट मेड.
This was the last slide. Yes, go through this question, try this out. CAT 23 as well as 24 दोनों साल में आया. ठीक है, correct. Vishnu's answer is correct. Karan, you might have made some slight error in calculation. Check कर लो. Or maybe you typed incorrectly. हाँ, correct. Nitish, you are close to the answer, but कुछ तो slight error हुआ है. देखो. चलो चेक करते हैं. अनिल इन्वेस्ट ₹22,000. अनिल के लिए प्रिंसिपल इज 22,000 फॉर 6 years in a certain scheme with 4% interest per annum. रेट है 4% per annum and is compounded half yearly. Sunil invests in the same scheme for 5 years. Okay, Sunil has invested in the same scheme for 5 years, but we don't know principal कितना invest किया. In fact, वही आपको पूछा है. The final question is to find initial investment made by Sunil is how much. तो Sunil का principal we have to find. He has invested for 5 years. Okay, it's the same scheme. So वही होगा rate 4% per annum, half yearly and so on. But उसके बाद उसने क्या किया? He reinvests the entire amount received at the end of 5 years for 1 year at 10% per annum simple interest. Okay, तो उसको सुनील को 5 साल के बाद जो भी अमाउंट मिलने वाला है वो सारा अमाउंट वो एक और साल के लिए 10% सिंपल इंटरेस्ट से इन्वेस्ट करता है. सो 1 year सिंपल इंटरेस्ट रेट है 10%. If the amounts received by both at the end of 6 years are same, दोनों को 6 साल के बाद जो अमाउंट मिलते हैं वो सेम है, तो फिर वो सुनील का इन्वेस्टमेंट वो पी कितना है वो पूछा है. सो लेट्स इक्वेट द अमाउंट आफ्टर 6 years. दोनों के लिए जो अमाउंट है वो इक्वेट कर लेते हैं. नाउ अनिल का जो अमाउंट होगा, वी नो 22,000 प्रिंसिपल will get multiplied with 1 plus. Now the rate is 4% per annum, but since the compounding is done half yearly, that 4 will get divided by 2.
हर आधे साल के लिए जो रेट यूज करना है वो होगा 4/2, दैट इज 2%। तो इसलिए वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1+2/100। रेट 4% पर एनम है, तो every half year we have to use 2% rate, and the number of years is 6। नंबर ऑफ ईयर 6 है, और हर साल में दो दो बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग, मतलब क्या टोटल 12 टाइम्स वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। दैट n which is 6 will get multiplied by 2 because of हाफ ईयरली कंपाउंडिंग। तो वो 6 into 2 से यहाँ पे पावर आएगा 12। वैसे ही वो जो सुनील का अमाउंट है 5 साल के बाद, सेम वे विल बी हिज प्रिंसिपल p into that rate will be 1+2/100 and it will get raised to the power 10। 5 साल के लिए हर साल में दो दो बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग, इसलिए वो पावर 10 बन जाएगा। एंड अभी ये जो अमाउंट आया है, वॉट एवर दिस अमाउंट टर्न्स आउट टू बी, दैट इज फर्दर इन्वेस्टेड फॉर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर 10% के रेट से। अभी जब सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का 10% कैलकुलेट होगा, वो भी ऐड हो जाएगा। अभी कोई भी नंबर आप 10% से बढ़ाते हो, 10% ऐड करोगे तो इट विल बिकम 1.1 टाइम्स। सो इसमें जब वो एक साल का 10% सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, दिस नंबर विल बिकम 1.1 टाइम्स। It has increased by 10% further. And now solve this for p. So that is your basic setup of this equation. तो ये equation setup करके you have to solve for p. Now that 1+2/100 raised to the power 12 और यहाँ पे है power 10. So that power 10 will cancel out from both sides. So power 10 जब दोनों साइड से cancel हो जाएगा, you will be left with 22,000 into 1+2/100 power 2. स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा। Now, when you divide by 1.1, when you take this 1.1 to the left hand side, 22,000, when you divide by 1.1, you will be left with 20,000. This 1+2/100 is basically 102/100, the whole square. हंड्रेड का स्क्वायर होता है 10,000। वो 10,000 इस 20,000 के साथ कैंसिल होके विल बी सिंपली लेफ्ट विथ 2 into 102 का स्क्वायर, and 2 into 102 square you can calculate to get the p value. So 102 का स्क्वायर into 2 will be 20,808. तो p का आंसर वैल्यू जो आएगा वो आएगा 20,808। पृथ्वी, देयर इज अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10%। आप कोई नंबर को, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर 500 रुपया डिपॉजिट किया, उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट, 10% का इंटरेस्ट मतलब कितना होने वाला है उसमें इंटरेस्ट ऐड, 50 रुपया ना, 500 में 50 रुपया ऐड होगा 10% मतलब, तो वो कितना हो जाएगा, 500 में और 50 ऐड किया तो हो जाता है 550। तो कैन वी से ये पैसा इंटू 1.1 हुआ। कोई भी नंबर आप 10% से बढ़ाते हो, 10% से बढ़ाना मतलब इंटू 1.1 करना। तो जब आप ये पैसा सुनील का जो 5 साल के बाद का पैसा है वो वापस 10% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट से रखने वाले हो एक साल के लिए, तो वो जो भी पैसा है वो 10% से बढ़ने वाला है। तो वो 10% से बढ़ना मतलब इंटू 1.1 हुआ। आरती वही तो किया। आप ये अमाउंट लो, t इंटू 1+2/100 रेज टू द पावर 10। ठीक है, ये 5 साल के बाद का अमाउंट है, उसका 10% ले लो, 1/10 ऑफ t इंटू 1+2/100 रेज टू द पावर 10। तो ये 1/10 मतलब 10% लिया और उतना ऐड किया। ठीक है, अभी ये दो टर्म्स में से ये p इंटू 1+2/100 रेज टू द पावर 10 कॉमन ले लो। 1 + 1/10 is 1 + 0.1, which is 1.1.
समझा? वही तो किया है। कोई भी नंबर में 10% उसका ऐड करना, 10% ऐड करना मतलब क्या, 1.1 से मल्टीप्लाई करना। तो वो जो भी अमाउंट है उसका 5 साल के बाद का, उस 5 साल के बाद के अमाउंट में उसका 10% लेके उतना ऐड किया। एनी अदर डाउट? Yeah, if it was 23% का simple interest as you have said, so it will be 1.23 times, correct? ठीक है, so those who want screenshot of this quickly do so. The answer is 20,808. This is the second slide if anyone wants screenshot. अरे पावर 12 है एक साइड पे और एक साइड पे पावर 10 है ना, डिवाइड करोगे दोनों साइड को तो if you have x raised to 12 on one side and other side it is p times x raised to 10, when you divide both sides by x raised to 10 इधर क्या आएगा, x square is equal to p ना. Why are you people not getting this? वाह क्या इसमें अभी. See, this is just basics of indices. देखो, a raised to m when you divide by a raised to n हो जाता है a raised to the power m minus n. So x raised to 12 when you divide by x raised to 10 हो जाएगा x square. See, whatever doubts you have, please ask. Done. The second slide. Next. Question number 5. Try this out. This is a slightly older question, not from the recent years. 6-7 years old question है. थोड़ा अलग है इसलिए ये कर रहे हैं. So let's see this question. A sum of money is lent at a certain rate of interest at compound interest. If instead the same amount was lent at simple interest, the interest for the first 2 years reduces by 160 rupees and that for the first 3 years reduces by 488 rupees. So principal kitna? You have to find that sum. Okay? So let's first understand the concept behind this question. So if you keep a deposit of P, principal P है, and the rate is R% per annum. For the first year, the simple interest that you are going to receive is R% of P. Or I'll just write it as R by 100 into P. R% of P हो गया R by 100 into P. ये हो गया पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट. पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता है?
same as simple interest. So first year ka compound interest also will be R% of P. So for the first year, you will see there is absolutely no difference in what you get as simple interest or what you get as compound interest. But second year onwards, there's a difference. So second year में simple interest will stay same R% of P. Simple interest तो उतना ही मिलते रहेगा हर साल. But compound interest, what we know is पहले साल का जो इंटरेस्ट था that itself will grow by R%. ये जो पहले साल का इंटरेस्ट है वो और आगे R% ग्रो होके उतना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा. So you are going to get R% of P plus further R% of R% of P. Okay? So R% of P plus further R% of R% of P. इतना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है सेकेंड ईयर में. Here, if you pull out that R by 100P common, you will be left with 1 plus R by 100. तो इतना आपको मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट इन द सेकेंड ईयर. Now, if you go for third year, सिंपल इंटरेस्ट तो उतना ही मिलेगा R% of P. कंपाउंड इंटरेस्ट जो थर्ड ईयर का होगा विल बी द सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट फर्दर इंक्रीज बाय R%. ये जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है उसमें और R% ऐड होने वाला है. So it will become R by 100 of P into 1 plus R by 100. That itself now when you increase by R%, वो एक और बार 1 plus R by 100 से multiply हो जाएगा. So this will become 1 plus R by 100 the whole square times R by 100 into P. तो ये हो गया आपका थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट. So now if you take the difference between the compound interest and simple interest for the first year, पहले साल में you will see there is absolutely no difference in them. So CISI difference after 1 year is 0. अगर आप दोनों स्कीम में सेम प्रिंसिपल सेम रेट से रखते हो तो एक साल के बाद तो उनमें इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता. इफ यू टेक द डिफरेंस आफ्टर 2 years, सो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट एंड 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये ऐड करके अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया, व्हाट यू विल सी, द CISI डिफरेंस आफ्टर 2 years. You take the total CI of the 2 years minus total SI of 2 years. So when you do that calculation, this is what you will get. It becomes R square by 100 square into P. ये दो नंबर ऐड करके देखो और ये दो नंबर ऐड करके देखो and take the difference. वैसे अगर आपने 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट वो ऐड करके डिफरेंस लिया तो CISI आफ्टर 3 years, that difference becomes R square by 100 square into P into 3 plus R by 100. ये हो जाता है 3 साल के बाद का डिफरेंस. यू ऐड दीज 3 numbers together and these 3 numbers together and take the difference. This is what you get. There is another way in which you could have derived this. आपके जो अमाउंट के फॉर्मूले है, टेक द कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट, टेक द डिफरेंस आफ्टर 2 years. दोनों फॉर्मूला में n को 2 प्लग करके डिफरेंस लो तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा. वैसे ही अगर आपने 3 साल के अमाउंट लेके डिफरेंस लिया, compound interest formula में put n as 3, simple interest formula में put n as 3 and take the difference. This is what you will get. So these are couple of standard results that you should know. तो एक बार आपको ये results पता है, using these results you can easily answer the question that is asked.
So the question asked was, instead of simple interest, if the money is given at compound, sorry, पहले compound interest में दिया था. So instead of compound interest, if it was given at simple interest, then the interest for the first 2 years reduces by 160 rupees. So instead of compound interest, if you give the money at simple interest, जो 2 साल का interest है वो 160 रुपया कम होने वाला है. So compared to compound interest, जो simple interest में पैसा मिलने वाला है 2 साल के बाद वो 160 कम है. It reduces by 160. That is what is given to us. So what you get from compound interest and what you get from simple interest for 2 years, it is 160 less. So P into R square by 100 square is 160. Okay. So compound interest, simple interest difference after 2 years, P into R square by 100 square, आपको 160 दिया. And वैसे ही 3 साल के लिए जो पैसा आपको मिलने वाला है, it reduces by 488. So instead of compound interest, if you give the money at simple interest, what you are going to get in first 3 years reduces by 488. So compound interest, simple interest difference after 3 years is 488. And that 3 years ka difference is P into R square by 100 square into 3 plus R by 100. So this is given as 488. And now solve this to get the P value. ये दो equation solve करके आपको P मिल जाएगा. So what you can do is simply substitute P R square by 100 square as 160 over here. तो यहाँ पे P into R square by 100 square को 160 ले लिया. 160 into 3 plus R by 100 is 488. Take this 160 to the right hand side and send this 3 also to the right hand side. तो आपको मिल जाएगा R by 100 is 488 by 160 minus 3. So from this you'll get the R value as 5. Once you know rate is 5, you can substitute that in this first equation to get the principal. So P into 5 square by 100 square by 160. तो आपको P मिल जाएगा. तो P हो जाएगा 160 into 400 is 64,000. Nitish, they will not ask you for 7 years. The questions will be based up to 3 years only. So know this कि compound interest, simple interest difference after 1 year is 0, after 2 years इतना होता है और after 3 years इतना होता है. 4 साल के लिए भी नहीं पूछेंगे because for 4 years we'll need fourth order expansions, which is not expected in aptitude exams. So aptitude exam में 3 साल के ऊपर ये difference पूछेंगे नहीं. So this derivation you can do it this way or you can also use the amount formula. देखो compound interest में जो amount का formula होता है, it is P times 1 plus R by 100 raised to the power n. And simple interest, this was in compound interest. Simple interest में जो amount का formula होता है वो होता है P into 1 plus NR by 100. ये दोनों अमाउंट के फॉर्मूला में इफ यू पुट n as 1 and subtract n को 1 लेके subtract करोगे तो you will see that both these terms will become same
n को जब 1 लेंगे तो, एंड यू विल गेट दैट फर्स्ट आंसर 0। n को जब 2 लेके सब्ट्रैक्ट करोगे आपको ये सेकंड फॉर्मूला मिल जाएगा, n को 3 लेके सब्ट्रैक्ट करो तो आपको ये थर्ड फॉर्मूला मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली डिराइव फ्रॉम द अमाउंट फॉर्मूले आल्सो। So if anyone wants screenshot of this slide, quickly do so. This is the second slide. This is the third slide. Next. Let's see a couple of examples about repayment in installments. Some students have confusion regarding installment repayment. Gaurav, this was the second slide. This was the third slide. Okay, I'll go back to the question again. This is the question. Done. So look at this simple example regarding repayment in installments. Now, यहाँ पे Amar has borrowed ₹2100. तो उसने जो लोन लिया है वो आपको दिया है 2100. Rate of interest है 10% per annum compound annually, and he has to repay it in 2 equal annual installments in 2 years. What is the value of each installment? Okay, so now ये 0 year mark है, ये 1 year, ये 2 years. 0 year mark जो है तभी लोन लिया गया है 2100 का. इंस्टॉलमेंट्स आर जनरली पेड एट द एंड ऑफ द ईयर. आप जब लोन लेते हो इमीडिएटली उसी वक्त पहला इंस्टॉलमेंट नहीं पे करोगे, यू विल पे द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर. सो ये जो टाइमलाइन है यहाँ पे एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, यहाँ पे आपका पहला इंस्टॉलमेंट पे होगा, लेट्स से इट इज एक्स. फिर ये सेकंड इंस्टॉलमेंट पे होगा एट द एंड ऑफ 2 years, यहाँ पे आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट पे होगा, लेट्स से एक्स. नाउ वो इंस्टॉलमेंट कितना पे करना है to clear out that loan of 2100 rupees. So now students make the mistake of saying x plus x, 2x is 2100. That is x को लेते हैं 1050, but वो गलत होगा. See, the money that is paid, उसका value क्या होता है depends upon when it is paid. So depending on when a particular installment is paid, its value at the time of taking loan will be different. तो ये जो पहला इंस्टॉलमेंट है जो 1 साल के बाद पे किया गया था, उसका वैल्यू एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑफ द लोन, यहाँ पे 0 year मार्क पे कितना है वो निकालना पड़ेगा आपको. यू डू नॉट जस्ट डायरेक्टली इक्वेट दैट x विद 2100. वो इंस्टॉलमेंट का वैल्यू एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑफ द लोन कितना था, उसके साथ आपको वो 2100 को इक्वेट करना है. ठीक है. So now what you'll have to think is, we know rate of interest है 10% per annum. Rate of interest अगर 10% है, we know there is a multiplier of 1.1. एक साल के बाद पैसा 1.1 से मल्टीप्लाई होता है. Here we are going in the past. That first installment जो 1 साल के बाद पे किया था, उसका जब 0 year जब लोन लिया था तभी कितना वैल्यू है, हमें वो पास्ट में लेके जाना है. तो you'll have to divide by 1.1. If there is a multiplier of 1.1 to go ahead, आपको उल्टा रिवर्स में जाते वक्त वो पहला इंस्टॉलमेंट का वर्थ कितना है वो निकालना है, तो you'll have to divide by 1.1. So this first installment which was paid at the end of the first year had a worth of x divided by 1.1 at the time of taking of loan. तो इस इंस्टॉलमेंट का वैल्यू at the time of taking loan is x divided by 1.1. वैसे ही ये जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट x है
वो 2 साल के बाद पे किया, 2 साल के बाद वो x था, एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑफ लोन उसका वर्थ कितना है? तो नाउ हियर यू हैव टू गो 2 years बैक, you have to divide by 1.1 twice. So ये जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है उसका वर्थ एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑफ लोन इज 1.1 स्क्वायर से डिवाइड करके. So x divided by 1.1 square is the value of that installment at the time of taking of loan. Now all these numbers are at the same point of time. 0 year mark पे जब लोन लिया गया था तभी के ये सारे नंबर्स है. And now we can add and equate. So now we can say ये x by 1.1 plus x by 1.1 square has to be equal to that loan taken 2100. And then solve this for x. So this is how you think in terms of installments. वो installment आपने पे किया उस वक्त x पे किया था, but वो x का value when you took the loan कितना था? So you're coming 1 year back for the first installment, so dividing by 1.1, you're coming 2 years back for that second installment, so that is why divided by 1.1 square. और वो 1.1 because rate है 10%, वो rate अगर 20% होता तो you'll have to divide by 1.2 and so on. So now when you solve this, you'll get x value as 1210. एक था, if you want to calculate you can do that. आप 2100 को 2 साल आगे लेके जाओ, फिर इंस्टॉलमेंट्स भी उस पीरियड पे, whichever टाइम पीरियड यू वांट. आपको सारे पैसे को किसी एक टाइम पीरियड पे लेके जाना. Nitish, which part you have not understood? Loan is taken at the 0 year mark. इंस्टॉलमेंट पहला जो पे किया था वो 1 साल के बाद पे किया था x. So what is its value at the time of taking the loan? So it will be x divided by 1.1, क्योंकि हम 1 साल उसको पीछे खींच रहे हैं. We know there's a multiplier of 1.1 to go ahead, so while going back you have to divide by 1.1. ये जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 2 साल के बाद पे किया था, तो व्हाट इज इट्स वर्थ एट द टाइम ऑफ टेकिंग लोन? लोन लेते वक्त 2 साल पहले उसका वैल्यू कितना था? तो यू हैव टू डिवाइड बाय 1.1 स्क्वायर. एंड नाउ ऑल मनी इज एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. जब लोन लिया था, लोन का वैल्यू है 2100, पहले इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है x बाय 1.1, दूसरे इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है x बाय 1.1 स्क्वायर. एंड नाउ इक्वेट x by 1.1 plus x by 1.1 square has to be 2100 and solve for x. Arti, how will you do that? आपको ये पैसा फ्यूचर में लेके जाना है तो फ्यूचर में लेके जाओ. आई एम नॉट सेइंग कि इसे ऐसे ही करना है, बट व्हाटएवर इट इज यू टेक एवरीथिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एंड सॉल्व. तो अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको फ्यूचर में लेके जाना है पैसे को, कैन डू दैट. सो आपने लोन लिया है 2100, 2 साल के बाद वो लोन का अमाउंट कितना बन जाएगा? सो 2 साल के बाद ये जो लोन है दैट इटसेल्फ विल गेट इंक्रीज बाय 10% ट्वाइस. लोन आप 2 साल आगे लेके जा रहे हो, तो इट विल बिकम 2100 इंटू 1.1 का स्क्वायर. ठीक है, तो ये लोन जो है वो 2100 रुपया 10% से 2 बार बढ़ेगा. फिर ये जो पहला इंस्टॉलमेंट है x, इसको भी 1 साल आगे लेके जाओ. इसको 1 साल आगे लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 1.1x. एंड ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट तो तभी
This was the previous slide. Look at this question. This was again asked in CAT a few years ago. Recent years में कुछ installment का पूछा नहीं. If you look at the last 5 years or so, nothing based on installments has been asked. So this is one of the older questions from CAT based on installments. So a laptop can be purchased by making a cash payment of 65,000. So अगर आप one shot payment करना चाहते हो तो it is 65,000. It can also be purchased by making a down payment of 5420 and paying 3 equal annual installments at 10% per annum compound interest. तो आपको one shot payment करना है तो 65,000 करना है, या फिर you pay 5,420 as a down payment और जो बचा हुआ पैसा है वो 3 equal annual installments में पे करना है. रेट है 10% per annum compound interest. If each installment was paid at the end of a year, the value of each installment is how much? So this is the 0 year mark. This is 1 year mark. This is 2 years. This is 3 years. ये आपका टाइमलाइन है. आप installments पे करने वाले हो at the end of the first, second and third year. Let's say the installments are X each. तो every installment है X. आपने लोन कितना लिया हुआ है? लोन इज नॉट 65,000 ना. 65,000 में से 5420 तो ऑलरेडी डाउन पेमेंट किया है. सो द लोन दैट यू आर टेकिंग इफेक्टिवली इज 65,000 minus 5420. So that is going to be 59,580. So 59,580 is your effective loan. उतना पैसा आपने बोरो किया हुआ और वो पैसा आपको 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है. बट वो 3 इंस्टॉलमेंट्स आप 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे कर रहे हो. तो वो जो एक्स पैसा है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उस सबका वैल्यू एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑफ लोन इज नॉट गोइंग टू बी एक्स. सो डोंट इक्वेट 59,580 विद एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स. वो गलत होगा, बिकॉज आपको सारे पैसा एक किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वैल्यू कितना है उसके साथ इक्वेट करना है. So I'll pull all the installments at the 0 year mark. आपको सारे पैसे को थर्ड ईयर तक आगे लेके जाना है और वहां पे इक्वेट करना है, वैसे कर लो. The choice is yours, but just take everything at one point of time. So ये पहला इंस्टॉलमेंट जो है वो अगर मुझे 0 ईयर के टाइम पे कितना उसका वैल्यू है वो निकालना है, तो that x have to divide by 1.1. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%. So it'll be a multiplier of 1.1. उसको एक साल पीछे पुल कर रहे हो तो you'll have to divide by 1.1. ये जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट x है इसको हमें 2 साल पीछे पुल करना है. 2 साल पीछे मतलब क्या, उसको डिवाइड बाय 1.1 दो बार करना है. सो विल बी डिवाइड बाय 1.1 स्क्वायर. और ये जो तीसरा इंस्टॉलमेंट है दैट एट द टाइम ऑफ टेकिंग लोन उसका वर्थ विल बी x डिवाइडेड बाय 1.1 क्यूब. अभी हमने सारे इंस्टॉलमेंट्स का वैल्यू एट द टाइम ऑफ टेकिंग लोन निकाला है. 0 ईयर मार्क पे ये 3 इंस्टॉलमेंट्स के ये वैल्यू थे एंड तभी लोन हमने लिया था 59,580. सो नाउ वी कैन इक्वेट. सो नाउ वी कैन से x by 1.1 plus x by 1.1 square plus x by 1.1 cube has to be that 59,580. यहाँ पे you can pull out x common and you can make a common denominator of 1.1 cube. तो जो न्यूमरेटर आएगा वो होगा 1.1 स्क्वायर प्लस 1.1 प्लस 1. तो x आ जाएगा 59,580 इंटू 1.1 क्यूब डिवाइडेड बाय, ये सारे नंबर ऐड करोगे तो कितना आएगा 3.31. चेक करो, this will add up to 3.31. correct.
and now perform this calculation to get the answer. y प्लस 1, हमने ये तीनों टर्म में से x कॉमन लिया है ना, और फिर कॉमन डिनोमिनेटर बनाया 1.1 क्यूब का. From all the three terms here, if you pull out x common, the denominator जब बनाओगे 1.1 क्यूब, ये पहला डिनोमिनेटर 1.1 है, उसको ऊपर 1.1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी वैसे हो जाएगा ना. फिर ये सेकेंड डिनोमिनेटर 1.1 स्क्वायर को इंटू 1.1 किया, ये थर्ड डिनोमिनेटर 1.1 क्यूब वैसे रखा है, तो इधर ऊपर न्यूमरेटर भी वैसे रहेगा ना. These are basic calculations. अगर calculations में कोई डाउट है तो चेक करो पहले, you do it yourself first. ठीक है. So that is the answer to this question, 23,958. So that is how you deal with installments based questions. अगर किसी को चाहिए होता कि ये सारा लोन हम 3 ईयर पॉइंट ऑफ टाइम पे इक्वेट करेंगे, चलेगा. तो ये 59,580 3 साल के बाद हो जाएगा दिस नंबर इंटू 1.1 क्यूब, और फिर सारे इंस्टॉलमेंट्स को भी 2 साल 1 साल आगे लेके जाओ and equate at the 3rd year point of time. As long as you equate all the money at some common point of time, it is fine. You'll get the correct answer. Okay, so those who want screenshot of this, quickly do so. This is the second slide. Next. Now let's solve some questions based on time and work topic. So now the basic concept of time and work is the work done is given by the rate at which the work is done into the time taken. तो टाइम और वर्क को रिलेट किया जाता है थ्रू रेट. क्या रेट से काम होता है, इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. रेट को और क्या नाम से बुलाते हैं, एफिशिएंसी. ठीक है. वी कैन फाइंड द टाइम टेकन by work done upon rate. Now for basic questions of time and work, you yes, correct. Karan, good. Yes, Neeta, correct. So Anil can paint a house in 60 days.
अनिल को 60 days लगते हैं टू पेंट द हाउस ऑन हिज ओन, while बीमल कैन पेंट इट इन 84 days. बीमल को अकेले को 84 days लग रहे हैं टू पेंट द हाउस. हमें दिया है अनिल स्टार्ट्स पेंटिंग एंड आफ्टर 10 days बीमल एंड चारू जॉइन हिम. So our timeline is like this. Anil starts the painting work. 10 दिन वो अकेला काम करता है. And after 10 days बीमल एंड चारू join him. बीमल और चारू ज्वाइन करते हैं. अनिल ने छोड़ा नहीं है. अनिल कंटिन्यूस. आगे बीमल एंड चारू join. And they complete the painting in 14 more days. They complete the painting in 14 more days. तो आगे ये तीनों 14 days काम कर रहे हैं. If they are paid a total of 21,000 for the job, share of Charu in Indian rupees proportionate to the work done by him is how much? वो 21,000 में चारू को कितना पैसा मिलना है ये आपको पूछा है. So let's find out what part of the work has been done by Charu. चारू ने कितना fraction of the work किया. अभी उसके लिए one standard way is assume the work as 1 unit. Let the work be 1 unit. वर्क अगर 1 यूनिट है, अनिल ने 60 डेज में किया है 1 यूनिट वर्क, तो अनिल का काम करने का रेट है 1/60 यूनिट्स पर डे. रोज 1/60 यूनिट्स करेगा वो. वैसे ही बीमल ने 1 यूनिट किया है 84 डेज में, सो उसका रेट होगा 1/84 पर डे. ठीक है. सो हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय ए एंड बी, वो अगर हमने टोटल वर्क में से सब्ट्रैक्ट कर लिया तो आपको मिल जाएगा चारू ने कितना काम किया. सो वर्क डन बाय सी डायरेक्टली निकाल लेते हैं. तो वर्क डन बाय सी. तो फ्रॉम दैट टोटल वर्क ऑफ 1 यूनिट ए ने कितना काम किया और बी ने कितना किया वो निकाल देंगे. अभी ए ने कितने दिन काम किया. ए तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक थ्रू आउट है. पहले 10 दिन है, आगे के 14 डेज भी है. सो ए इज प्रेजेंट फॉर 24 डेज. ए 24 डेज अपने रेट से काम करेगा 1/60 पर डे. तो उसका जो काम होगा विल बी 24/60. 1/60 इंटू 24. बी ने काम किया है 14 डेज के लिए. बी इज प्रेजेंट ओनली फॉर दैट लेटर पार्ट ऑफ 14 डेज. वो अपने रेट से काम करेगा 14 डेज के लिए. सो द वर्क डन बाय बी विल बी 14/84. तो ये सब्ट्रैक्ट किया 1 में से तो मिल गया वर्क डन बाय सी. So that will be 1 minus 24/60 will reduce to 2/5 and 14/84 will reduce to 1/6. This 2/5 and this 1/6 we will add together. So when we add these two together, ये आ जाएगा 12 plus 5 17/30 and 1 minus 17/30 is 13/30. तो चारू ने जो काम किया है वो है 13/30 यूनिट्स. तो 13 आउट ऑफ 30 अगर उसने काम किया है तो उसको पैसा भी उतना ही मिलेगा, सेम फ्रैक्शन ऑफ दैट टोटल 21,000. सो चारू का जो पेमेंट होगा विल बी 13/30 ऑफ 21,000. सो चारू का शेयर विल बी 13/30 ऑफ 21,000. तो 13 7 हो जाएगा 91. सो 9100. ठीक है. सो दैट इज द आंसर ऑप्शन बी. Those who prefer LCM work method would have taken the amount of work as LCM of 60 and 84. वैसे भी कर सकते हो. Absolutely no nothing wrong doing it that way. So everyone understood this question? इसमें कोई doubts? Pretty simple question to begin with. टोटल काम जो 1 यूनिट लिया है उसमें से बी एंड सी ने कितना किया हुआ है वो निकाल दो. बचा हुआ काम सी ने किया है और उसी फ्रैक्शन में उसको पैसा मिलेगा.
हमने सी ने काम कितना किया है वही निकाला ना, पर डे सी कितना करता है उससे क्या लेना देना है। अगर आपको चाहिए सी पर डे कितना काम करेगा, तो दिस 13/30 यू डिवाइड बाय 14। इसको एलसीएम मेथड से करना है, ठीक है, एलसीएम मेथड से कर लो, सेम थिंग ही तो करना है, और कुछ नथिंग चेंजेस एज सच, जस्ट कैलकुलेशंस बढ़ा दोगे अननेसेसरली। So you'll assume the work as LCM of 60 and 84. So what is LCM of 60 and 84? 420. तो अब काम को अज्यूम कर लिया 420 यूनिट्स। काम अगर 420 यूनिट्स है, अनिल करता है 60 डेज में, तो उसका जो काम करने का रेट होगा विल बी 420 डिवाइडेड बाय 60, दैट इज 7 यूनिट्स पर डे। बीमल का रेट वैसे आएगा 5, 84 इंटू 5 होता है 420, सो बीमल विल बी डूइंग 5 यूनिट्स पर डे। अब ये 420 जो टोटल काम है, उसमें से सी ने कितना काम किया है वो निकाल लेते हैं। ए एंड बी ने क्या किया है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वर्क डन बाय सी मिल जाएगा। सो फ्रॉम 420 you remove out the work done by A. A we know has worked for 24 days, 10 दिन और आगे के 14 days, तो A तो पूरा 24 days काम कर रहेगा। तो 24 into 7 ये है A ने किया हुआ काम। वैसे B 14 days काम कर रहा है, तो वो 5 के रेट से काम करेगा 14 days, तो उसने काम इतना किया है 14 5 तो I'll be 420 minus 24 into 7, 7 4s are 28, 2 carries, so 168 हो जाएगा ये, and 14 5s are 70. तो 420 minus 168 minus 70 ये कितना हो गया? Will be 350 minus 168. Yes, कितना हो जाएगा? This will be 350 minus 168, 32, 182. तो अभी वर्क डन बाय सी आया है 182 यूनिट्स। टोटल 420 यूनिट जो काम है उसमें से सी ने किया है 182, तो उसको जो पैसा मिलेगा वो उसी फ्रैक्शन में मिलेगा। ही इज गोइंग टू गेट 182 पार्ट्स आउट ऑफ 420 पार्ट्स, सो 182 पार्ट्स आउट ऑफ 420 पार्ट्स ऑफ 21,000, ये सी का शेयर। एंड कैलकुलेट दिस, so 42 21 2s are 42, 21 1s are 21, and this will become 9100. ठीक है, so LCM method, however you want you can do this. Done. Those who want screenshot of this quickly do so. Try this next question. This is cat 22 slot 2, slightly more challenging. थोड़ा पढ़ के ध्यान से समझो question and do it. Okay, so let's see this question. So, working alone, the times taken by Anu, Tanu and Manu to complete any job are in the ratio 5, 8, 10. So, 3% है Anu, Tanu, Manu. ये 3 लोगों को जो टाइम लगता है उसका रेशियो दिया है 5:8:10।
they accept a job which they can finish in 4 days if all work together for 8 hours per day. तो अगर सबने साथ में काम किया 4 दिन में काम खत्म होगा if they are doing 8 hours of work per day. However, Anu and Tanu work together for the first 6 days, working 6 hours 40 minutes per day. Then the number of hours that Manu will take to complete the remaining job working alone is how much? ठीक है, तो अगर सबने साथ में काम किया होता तो 8 घंटे पर डे काम करके 4 दिन में काम खत्म कर सकते हैं. बट अगर अनु एंड तनु ने 6 दिन पहले काम किया वर्किंग 6 hours 40 minutes पर डे, तो फिर मनु को कितने घंटे लगेंगे टू कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब, ये आपको पूछा है. नाउ टू डू द सेम वर्क, टाइम टेकन एंड द रेट, हाउ आर दे गोइंग टू वेरी? अगर वर्क कांस्टेंट है तो टाइम एंड रेट वेरी इनवर्सली. इफ वर्क इज कांस्टेंट, टाइम एंड रेट वेरी इनवर्सली. जो टाइम ज्यादा लेगा उसका रेट कम होता है, जो टाइम कम लेगा रेट ज्यादा होता है. सो अगर आपको टाइम टेकन का रेशियो पता है 5:8:10, उनके रेट का रेशियो होगा इसका इनवर्स. सो जो रेट होंगे उनके काम करने के वो होंगे 1/5:1/8:1/10 इस रेशियो में. दैट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स रेशियो. ठीक है, let's convert this to a integer value. To convert this fractional ratio to integers, we multiply with the LCM. 5, 8, 10 का LCM होता है 40. तो we multiply with 40, जो रेट का रेशियो आएगा 1/5 into 40 is 8, 1/8 into 40 is 5, 1/10 of 40 is 4. तो ये आ गया उनके रेट का रेशियो. Now, once you know rate का ratio है 8:5:4, let us assume these as their per hour rates. तो ये उनके काम करने के रेट है, ये assume करते हैं. So, these are rates per hour. तो अनु 1 घंटे में 8 यूनिट काम करती है, तनु 5 यूनिट एंड मनु 4 यूनिट. ठीक है. So now that we have established these as their rates, जब वो चारों साथ में काम, सॉरी ना, तीनों साथ में काम करेंगे तो they will finish the entire work in 4 days working 8 hours per day. So that total amount of work अभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे. So total work will be, ये तीनों जब साथ में काम करेंगे उनके रेट ऐड होने वाले 8 + 5 + 4. 8 + 5 + 4 is 17 units per hour, and they are working 8 hours per day, so into 8, and they are going to take 4 days, so into further 4. इतना होगा total work done. ठीक है, so they are doing 70 units per hour, working 8 hours per day and taking 4 days to complete the total work. तो इतना है वो total work. So 17 into 32. 17 2s is 34. 3 will carry. 17 3s are 51 plus 3 is 54. So 544. तो टोटल वर्क 544 यूनिट्स है. अभी वो 544 यूनिट्स में से अनु एंड तनु कितना खत्म करने वाले, लेट्स फाइंड दैट आउट. तो फॉर अनु एंड तनु, they are working 6 hours 40 minutes per day. 6 hours 40 minutes is how many hours? 6 hours 40 minutes बन जाता है that 40 when you divide by 60, 40 by 60 होता है 2/3, so it becomes 6 2/3 hours. I hope by now everyone is able to do these kind of things. 6 घंटा 40 मिनट, 40 मिनट मतलब वो 40 when you divide by 60 becomes 2/3 hours, which when you convert to improper fraction, this will become 6 3s are 18 plus 2, so 20/3 hours. तो अनु एंड तनु 20/3 hours काम कर रहे हैं डेली और वो 6 दिन काम कर रहे हैं. सो द वर्क डन बाय देम
विल बी अनु एंड तनु का रेट जब ऐड करोगे इट इज 8 + 5 13. अनु एंड तनुज रेट टुगेदर 8 and 5 हो जाता है 13. दे आर वर्किंग फॉर 6 days, 20/3 hours per day. तो इतना काम उन्होंने कर लिया है. 3 2s are 6, so 26 into 20, 26 into 20 is 520. तो 544 जो टोटल काम है उसमें से 520 तो अनु एंड तनु ने ऑलरेडी कर लिया है. सो रिमेनिंग वर्क जो मनु को करना है वो है 24 यूनिट्स. सो मनु हैज टू डू 24 यूनिट्स. हमें पता है मनु का रेट है 4 यूनिट्स पर आवर. उसको अगर 4 यूनिट करने हैं पर आवर टू डू 24 यूनिट्स, जो टाइम लगेगा होगा 6 आवर्स. करेक्ट. सो m takes 6 hours. That is the answer to the question, 6 hours. So go through this. इसमें कोई doubts तो पूछ लो. This is a very efficient way to do this question. बस time का ratio आपको पता है. Inverse of that will be rate ratio and assume the rates as 854 and work out the answer. $544 is the total work done. तीनों मिलके जब काम करते हैं तीनों के रेट ऐड हो जाएंगे पर आवर. दे विल डू 17 यूनिट्स. वी नो दैट दे हैव टेकन 4 days working 8 hours per day. 520 is the work done by Anu and Tanu. हमें पता है अनु एंड तनु वर्क फॉर 6 days, वर्किंग 6 hours 40 minutes per day. तो उन्होंने वो 6 दिन में 6 hours 40 minutes per day के रेट के टाइम में कितना काम किया होगा वो हमने कैलकुलेट किया. 40 minutes मतलब क्या होता है? 40 minutes is 2/3 hours, right? 40 divided by 60. 6 2/3 कैसे, मतलब 6 hours 40 minutes है ना. 40 divided by 60 हो गया 2/3. यशवी, अगर टाइम इज वर्क डन इज कांस्टेंट, अगर आप सेम काम करने वाले हो तो जिसका रेट ज्यादा है उसका टाइम कम होगा, जिसका टाइम कम है रेट ज्यादा होगा. सो टाइम एंड रेट विल वेरी इनवर्सली इफ वर्क इज कांस्टेंट. So those who want screenshot of this quickly do so. क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया है ना. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 6 अभी तो. गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9. ट्राई दैट. सेकेंड स्लाइड पे कुछ एक लाइन लिखा है बस. This was the first slide of question number 8. This is the second slide. Question number 9. Try this out. ये कैट 22 स्लॉट 3 का क्वेश्चन है. सेम क्वेश्चन कैट 24 में भी था. स्लाइड चेंज था. स्लाइड जस्ट वो लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है वो थोड़ा सा चेंज किया था. सो दिस सेम क्वेश्चन मॉडल वाज प्रेजेंट लास्ट ईयर आल्सो. कैट 22 में था एज वेल एज कैट 24 में.
We'll take a break at 4 o'clock. क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर निकालो क्वेश्चन का, ब्रेक वगैरह बाद में सोचो. Correct. Simple questions. Most of the students are not answering question. Very few are able to answer. The same 3-4 students are answering questions. How come everyone is not able to answer such questions? Try करो, देखो, not difficult at all. अगर सामने कुछ मूवीज वगैरह लगा के बैठे होंगे तो ये प्रॉब्लम होगा. Turn off everything else, focus on the question, quickly answer the questions. ठीक है, everyone got that answer 11? Good. चलो चेक करते हैं those who did not get the answer 11. Let's see. यहाँ पे Bob can finish a job in 40 days if he works alone. ये दिया. Alex is twice as fast as Bob and thrice as fast as Cole in the same job. तो ये जो 3 लोग के रेट है, इनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिया है. जब आपको रेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया होता है, we assume their rates and work out the answer. So Alex is twice as fast as Bob. Alex is twice as fast as Bob and thrice as fast as Cole. Alex का rate is thrice of Cole. So let us assume Alex का rate is 6. 6 क्यों लिया है? क्योंकि वो 2 का मल्टीपल है एज वेल एज 3 का. हमें पता है एलेक्स का रेट इज डबल ऑफ बॉब, इट इज आल्सो ट्रिपल ऑफ कोल. तो ऐसा नंबर कन्वीनियंट अगर चाहिए जो किसी नंबर का डबल भी है एज वेल एज ट्रिपल है, तो टेक इट एज 6. सो लेट रेट ऑफ एलेक्स बी 6. एलेक्स का 6 रेट लिया है तो बी का बॉब का हो जाएगा 3 सिंस एलेक्स इज ट्वाइस ऑफ बॉब, एंड कोल का हो जाएगा 2 since Alex is thrice of Cole. So once you assume the rate of Alex as 6, Bob का rate मिलेगा 3 and Cole का rate मिलेगा 2. ठीक है? Once you have assumed these as the rates, हमें पता है Bob can finish a job in 40 days. Bob को 40 days लगते हैं to complete the work. So जो work है वो कितने यूनिट्स होगा? Bob करता है 3 यूनिट्स पर डे और उसको लगता है 40 days. So 3 units per day, 40 days will be 120 units. Now, उन्होंने एक पैटर्न दिया है. Suppose Alex and Bob work together on the first day. So first day it is Alex and Bob working together. So day 1 पे Alex and Bob काम करेंगे. उसके बाद Bob and Cole work together on the second day. Second day पे Bob and Cole. And third day Cole and Alex work together on third day. Third day Cole and Alex. And they continue by the work by repeating this 3-day roster. ये जो 3 दिन का पैटर्न है ये रिपीट करते हैं वो. So Alex and Bob work on the 4th day and so on. The total number of days Alex would have worked when the job gets finished is how much? Total कितने दिन Alex ने काम किया ये आपको पूछा है. So we know when Alex and Bob work together, वो पहले दिन पे 6 plus 3 that is 9 units काम हो जाएगा on day 1. Second day when Bob and Cole work together, the amount of work done will be 3 plus 2 that is 5 units. And third day पे जब Cole and Alex काम करेंगे तभी work done will be 6 plus 2 that is 8 units. और ये पैटर्न फिर रिपीट होते रहेगा. So 9 5 8 9 5 8 ऐसे वो चलते रहेगा. So 9 plus 5 plus 8 that is total 22 units are done in 3 days.
हमें टोटल काम करना है 120 यूनिट्स का। अभी ये 22 का डायरेक्ट मल्टीपल तो नहीं है 120, सो व्हाट वी कैन डू इज गो टू अ मल्टीपल ऑफ 22 बिलो 120, एंड 22 का मल्टीपल 120 के नीचे होता है 110। तो ये 22 यूनिट्स आपने 5 बार रिपीट किया, ये पैटर्न जो है ये अगर आपने 5 बार रिपीट किया तो 110 यूनिट हो जाएंगे। सो द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड विल बी 3 times 5, दैट इज 15 days। ठीक है, तो 15 दिन में ये 110 यूनिट काम होने वाला है। 22 यूनिट्स ऐसे 5 बार रिपीट करोगे तो 110 यूनिट हो जाते हैं 15 डेज में। अभी और 10 यूनिट काम बाकी है। सो ऑन 16th डे इट विल बी ए एंड बी टर्न टू वर्क अगेन। जो फ्रेश पैटर्न होगा वापस ए बी से चालू होगा। सो डे 16 पे ए बी विल डू 9 यूनिट्स, एंड देन 17th डे पे बी सी काम करने वाले हैं और वो पूरा काम खत्म कर देंगे। जो बचा हुआ 1 यूनिट काम है वो उस दिन पे वो कर लेंगे। तो टोटल हाउ मेनी डेज एलेक्स इज वर्किंग? तो एलेक्स हर 3 दिन के पैटर्न में 2 दिन प्रेजेंट होता है, और हमने ये 3-3 दिन का पैटर्न 5 बार रिपीट किया है। वो 3-3 दिन में हर 3 में 2 दिन एलेक्स होगा। सो 2-2 बार ऐसे 5 बार हो जाएगा, 2 into 5। सो एलेक्स विल बी प्रेजेंट 10 days, but we also see that he is present on 16th day। 16th day भी एलेक्स काम कर रहा है। सो टोटल 11 days एलेक्स will be present। सो एलेक्स कितने दिन काम करेगा? वो आंसर है 11। ठीक है, तो ये कैट 22 में ऐसे पूछा था। इंस्टेड ऑफ दिस कैट 24 में जब आया था ये क्वेश्चन लास्ट ईयर, तभी पूछा था व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज डन बाय एलेक्स। एलेक्स ने कितना फ्रैक्शन किया है काम का, वो पूछा था। सो अगेन इट वाज द एग्जैक्ट सेम पैटर्न, बट वी जस्ट हैड टू फाइंड हाउ मेनी यूनिट्स वर डन बाय एलेक्स आउट ऑफ दैट 120। ठीक है, सो इफ एनीवन वांट्स स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, क्विकली डू सो। This is the second slide. Done? ठीक है, चलो, so we'll take a break now. After break we'll resume with further questions. Alex is working for 11 days, no? So if we know Alex is working for 11 days, 1 1.1 square 1.1 क्यूब, उसमें सिर्फ x ऐड होगा, करेक्ट? See, आप अगर इंस्टॉलमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे कर रहे हो, आपका पहला इंस्टॉलमेंट x यहाँ पे होगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट यहाँ पे होगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट यहाँ पे। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का वैल्यू विल बी x itself. It is at the 0 year mark. Second installment का value will be x divided by 1.1, and third installment का हो जाएगा x divided by 1.1 square. And then the equation that you will write will be x plus x divided by 1.1 plus x divided by 1.1 square is equal to that number 59,580 to give you the value of each installment. Okay? That will be the change if the installments were paid at the beginning of the year. Got it. And ये अगर कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, if it was simple interest, हाँ, उस केस में क्या चेंज होता? जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर को डिवाइड कर दिया है। हाँ, अभी there will not be any idea of multiplier, there will be a interest added. So अभी 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा उतना आपको सबट्रैक्ट करना है। So ये जो पहला इंस्टॉलमेंट x है उसका वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द 0 year मार्क आपको चाहिए, तो उसमें से जो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा वो सबट्रैक्ट करो, वो माइनस होगा। हाँ, सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट में से 2 साल का इंटरेस्ट सबट्रैक्ट करोगे,
थर्ड इंस्टॉलमेंट से 3 साल का इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करोगे। Got it. एंड इक्वेट दैट टू दैट 59,580। सिंपल Okay. इंटरेस्ट में And थिंक इन टर्म्स ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शंस। पीछे आना है तो सब्ट्रैक्ट करना है, आगे जाना है तो ऐड करना है इंटरेस्ट। got it. या Yes. Thank you so much. वेल, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, कश्यप। अभिषेक, 110 यूनिट अगर 15 दिन में हुए हैं, नेक्स्ट दिन जो 16th डे होगा उस पे वापस एलेक्स एंड बॉब आएंगे काम करने के लिए। डू यू अंडरस्टैंड दैट? हाँ, तो 16th डे पे ए बी ने काम किया, वो 9 यूनिट्स कर लेंगे, एंड देन 17th डे पे बचा हुआ 1 यूनिट कर लेंगे बी एंड सी। तो टोटल 17 दिन में काम खत्म हो गया। ये ठीक है? हाँ, तो अभी उसमें से एलेक्स कितने दिन काम करता है? तो वी नो ये 3 दिन का जो साइकिल है, डे 1, डे 2, डे 3, वो 3 दिन में से एलेक्स सिर्फ 2 ही दिन है, फर्स्ट एंड थर्ड डे। एलेक्स रोज नहीं काम करता, तो हर साइकिल में 2 दिन एलेक्स होता है। तो हमने वो 3 दिन का पैटर्न 5 बार रिपीट किया ना, 3 5 वो 15। वो हर पैटर्न में 2-2 दिन एलेक्स होगा, तो वो 5 पैटर्न ऐसे 3-3 दिन के। सो एलेक्स उसमें 2-2 बार होगा, सो 10 डेज एलेक्स इज प्रेजेंट। हाँ, एंड देन 16th डे ऑल्सो एलेक्स इज प्रेजेंट, तो इसलिए टोटल 11 डेज एलेक्स है। या ओके, वेलकम। ऋषिका, if there is pattern based questions, this is how you should follow। यहाँ पे एक रिपीटिंग पैटर्न है 3-3 दिन का।
क्षितिज क्वेश्चन में दिया है कि बॉब कैन फिनिश द जॉब इन 40 days, नॉट ऑल थ्री टुगेदर. बॉब कैन फिनिश इन 40 days ना. तो बॉब का रेट इनटू दैट 40 विल गिव द अमाउंट ऑफ वर्क. तीनों ने साथ में मिलके काम 40 days में किया, ऐसे अगर दिया होता क्वेश्चन में, तो यू वुड हैव टेकन वर्क एज 6 + 3 + 2 into 40. बट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया बॉब कैन फिनिश द वर्क इन 40 days. ठीक है, display the next question on the screen. If anyone wants to try, you can try it out. ये cat 23 slot 3 question है.
I am not speaking anything. I'll start at 4:30. ठीक है, चलो. So I hope everyone is back. So let us continue. This is question number 10. Cat 23 slot 3 में question आया था ये. Very interesting question. तो यहाँ पे 3 लोग हैं, राहुल, रक्षिता, गुरमीत. Working together, they would have taken more than 7 days to finish a job. Okay? जब साथ में काम करेंगे, they take more than 7 days to finish the job. On the other hand, Rahul and Gurmit working together would have taken less than 15 days to finish the job. सिर्फ राहुल एंड गुरमीत ने अगर काम किया होता, they would have taken less than 15 days to finish the job. However, they all worked together for 6 days, followed by Rakshita, who worked alone for 3 more days to finish the job. अगर सबने 6 दिन काम किया और बाद में रक्षिता ने अकेले ने 3 दिन काम किया, तो जॉब पूरा खत्म हो जाता है. If Rakshita had worked alone on the job, then the number of days she would have taken to finish the job cannot be which out of these options. तो रक्षिता अगर अकेले काम करती है पूरा जॉब, तो इनमें से कौन सा नहीं हो सकता the time taken. You have to find which cannot be the time taken. Now, for such kind of questions, you'll be able to find out the maximum time that Rakshita can take, the minimum time that Rakshita can take. मतलब ये ऑप्शन में से एक नंबर उसका मैक्सिमम पॉसिबल से ज्यादा होगा या एक नंबर उसके मिनिमम पॉसिबल से कम होगा. So if you are taking a chance, the best bet would be to pick either the biggest option or the smallest option. Either ये 21 उसके मैक्सिमम टाइम से ज्यादा होगा या फिर ये 16 उसके मिनिमम टाइम से कम होगा. So a good bet will be to pick one out of these two as your answer. Either the maximum that you will get will be 21, say that 21 crosses that maximum, or the minimum से 16 कम हो सकता है, and one out of those two will be your answer. But now exactly which one is the answer, let's see. So what we'll do is we'll assume their rates as A, B and C. So let Rahul do A units per day, Rakshita do B units per day, Gurmit C units per day. Let us assume the total work as 1 unit. ठीक है, अगर वो तीनों ने सारा काम 7 दिन में किया, अगर वो सारा काम जो 1 यूनिट है वो अगर 7 दिन में किया, तो उनका जो कंबाइंड रेट होगा विल बी 1/7 पर डे. ठीक है, अगर उन्होंने पूरा काम 7 दिन में किया होता, पर डे दे मस्ट हैव डन 1/7 यूनिट्स. दैट इज देयर कंबाइंड रेट. But we know they actually take more than 7 days. They actually take more than 7 to complete the work. अगर उनको टाइम मोर देन 7 days लगता है, उनका जो कंबाइंड रेट होगा वो 1/7 से कम होगा. So from this first condition we can say A plus B plus C is less than 1/7.
ये समझा सबको? If they had finished the entire work in 7 days, their combined rate would have been 1/7. But we know they actually take together more than 7 days. 7 दिन से ज्यादा लगते हैं, मतलब उनका जो combined rate होगा वो 1/7 से भी कम होगा. ठीक. उसके बाद हमें ये पता है when they all work for 6 days, जब सब लोग 6 दिन काम करेंगे, राहुल वो 6 दिन में 6A यूनिट्स कर लेगा, रक्षिता 6B, गुरमीत 6C. So the total work done will be 6 times A plus B plus C. तो सब लोग जब 6 दिन काम करते हैं, इतना काम होने वाला है. This is followed by Rakshita working alone for 3 more days. रक्षिता रोज करती है B यूनिट्स, so वो 3 दिन में कर लेगी 3B यूनिट्स. And this put together is the entire job 1 unit. पूरा वर्क 1 यूनिट जो हमने लिया है वो ये है. So all of them work for 6 days and then Rakshita worked for 3 more days to complete the work. So now we know A plus B plus C is less than 1/7. तो अभी ये जो term आएगा, this term here, 6 times A plus B plus C will be less than 6/7. अगर A plus B plus C is less than 1/7, उसको into 6 किया तो ये जो रिजल्ट है वो 6/7 से कम होगा. हमें पता है ये दो टर्म्स का जो सम है वो 1 है. अभी सम 1 आने के लिए एक टर्म अगर 6/7 होता है तो दूसरा होना चाहिए 1/7. बट एक्चुअली तो ये पहला टर्म 6/7 से कम है, मतलब ये दूसरा टर्म 1/7 से ज्यादा होगा. तो नाउ वी नो 3B जो है वो 1/7 से ज्यादा है. Taking this 3 to the right hand side, we can say B is more than 1/21. तो अगर रक्षिता का रेट होता 1/21, रक्षिता का रेट अगर होता 1/21, she would have finished 1 unit work in 21 days. बट एक्चुअली तो उसका रेट 1/21 से ज्यादा है. हाँ, सो वही तो लिखा है ना. सो ये 3B और ये बाकी सब ने 6 दिन काम किया, रक्षिता ने 3 दिन काम किया, पुट टुगेदर वो 1 यूनिट काम हो चुका है. ठीक है. हमें पता है फ्रॉम दैट फर्स्ट कंडीशन दैट A plus B plus C is less than 1/7. वो समझा, वो पहले लाइन से हमें मिला है, क्योंकि वो तीनों ने मोर देन 7 days लिया टू फिनिश द जॉब. अगर 7 दिन में जॉब खत्म करते तो उनका रेट होता 1/7, but they are taking more than 7 days to finish the job, मतलब A plus B plus C will be less than 1/7. अगर A plus B plus C less than 1/7 है, उसका 6 गुना जो नंबर आएगा that will be less than 6/7. A plus B plus C खुद 1/7 से कम है, तो 6 times A plus B plus C वो 6/7 से कम होगा. हमें पता है ये दोनों टर्म का सम तो 1 चाहिए. अगर एक टर्म 6/7 होता है तो दूसरा होना चाहिए 1/7 टू गेट सम 1. बट अगर एक टर्म 6/7 से छोटा है तो दूसरा 1/7 से बड़ा होना चाहिए. तो इसलिए वो 3B शुड बी ग्रेटर देन 1/7. ओके, ठीक है. अगर आपको लोअर लिमिट चाहिए, रक्षिता का टाइम मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम 21 से कम ही होना चाहिए उसका टाइम. लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालना होता तो कैसे निकालोगे? अभी यहाँ पे जरूरत है नहीं, बिकॉज आंसर हैज टू बी 21 itself इज नॉट पॉसिबल. सो ऑप्शन बी इज योर आंसर. बट अगर वो लोवेस्ट टाइम निकालना होता तो ऐसे निकालते. उसके लिए हमें ये दिया है. इफ यू लुक एट दिस कंडीशन, Rahul and Gurmit working together
would have taken less than 15 days to finish the job. राहुल और गुरमीत जब साथ में काम करेंगे, they take less than 15 days. राहुल और गुरमीत का कंबाइंड रेट है A plus C. अगर उन्होंने 15 दिन में काम किया होता तो A plus C would have been 1/15. Okay? Rahul or Gurmeet का combined rate A plus C would have been 1/15 if they finish in 15 days. But we know they are actually taking less than 15 days. अगर उनका less than 15 days लग रहा है, मतलब rate उनका 1/15 से ज्यादा होगा. So A plus C is more than 1/15. ठीक है? हमें ये भी पता है कि A plus B plus C has to be less than 1/7. A plus B plus C is less than 1/7. तो उसमें ये जो टर्म है A plus C वो 1/15 से ज्यादा है. अगर A plus C 1/15 से ज्यादा है तो we can say B itself has to be less than 1/7 minus that 1/15. So here when you make a common denominator of 105, you'll get 8/105. तो B का जो रेट है वो 8/105 से कम होना चाहिए. मतलब उसका जो टाइम आएगा, रक्षिता का जो टाइम आएगा has to be greater than 105/8. 105/8. 8 ones are 8, 8 threes are 24. So 13 1/8 days. So that is the minimum time. उससे उसका टाइम ज्यादा ही होना चाहिए. तो यहाँ पे कोई ऑप्शन 13 1/8 से कम होता तो वो भी would be wrong. Okay, her time taken has to be more than 13 1/8 days. Good, correct. Himanshu and Arudam has correctly answered. So ऐसे आप उसका मिनिमम पॉसिबल टाइम भी निकाल सकते हो, बट यहाँ पे वो जरूरत नहीं थी. So those who want screenshot of this, quickly do so. The second slide. This is question number 11, last year का question है. Try this out. Cat 24 slot 1. Simple questions. If you are able to solve, everyone should get the answer. Correct, Karan. Good. Yes, Ekta. Correct. Good. Everyone is correctly answering. 6 is the answer. Good. चलो check करते हैं. Those who are not getting this, let's see. So यहाँ पे दिया है रेनू would take 15 days working 4 hours per day to complete a certain task. She is taking 15 days working 4 hours per day. मतलब टोटल कितने घंटे काम करना पड़ रहा है उसको. So Renu is taking 15 into 4, 60 hours to complete the work.
तो 60 आवर्स लगते हैं। Whereas Seema would take 8 days working 5 hours per day to complete the same task. Seema कितने घंटे लेती है? तो 8 days working 5 hours a day. So 8 5s are 40 hours to complete the same task. Let us assume the amount of work. So now amount of work आपको चाहिए तो 1 unit ले लो, आपको इनका LCM लेना है तो LCM ले लो. However you want, you can proceed. So I'll assume the work as LCM. So let work be 60 and 40 का LCM हो गया 240 units. वर्क 240 यूनिट्स अगर है तो रेनू का जो रेट है वो 240 यूनिट 60 आवर्स में कर रही है, तो उसका जो पर आवर रेट है विल बी 240 by 60, दैट इज 4. तो रेनू का रेट इज 4 यूनिट्स पर आवर. वैसे सीमा का रेट, शी डज 240 यूनिट्स इन 40 आवर्स, तो उसका रेट पर आवर होगा 6. शी वुड बी डूइंग 6 यूनिट्स पर आवर. Now let's see further what is given. They decide to complete the work together, okay, and Seema agrees to work for double the number of hours per day as Renu. Okay, Seema is working for double the number of hours per day as Renu, while Renu agrees to work for double the number of days as Seema. Seema double the number of hours per day as Renu, and Renu works for double the number of days as Seema. If Renu works 2 hours per day, the number of days Seema will work is how many? So Renu is doing 2 hours per day. So Yes. the LCM is wrong. There should be 120 units. हाँ, मैंने 240 ले लिया है, not LCM, it is a common multiple. Yes, sorry. चलेगा, 240 लिया होता तो भी चलेगा, 120 कर लेते हैं, no problem. 60-40 का LCM actually is 120. I had taken the higher common multiple. So that means रीमा का जो रेट है, रेनू का जो रेट है वो 120 by 60 से 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 120 by 40 से 3 आ जाएगा. Any common multiple is fine. We'll get the same answer. So now Renu, we know, is working for 2 hours per day. Seema, we know, works for double the number of hours per day as Renu. So Renu अगर 2 घंटे काम करती है per day, Seema has agreed to work for double the number of hours per day as Renu. So इसका double हो जाएगा 4 hours per day. We also know that Renu agrees to work for double the number of days as Seema. So let's say Seema has worked for X number of days. Seema अगर X days काम करती है तो Renu has agreed to work for double the number of days as Seema. So that will be 2x days. ठीक है, तो अभी Renu 2 घंटे काम करेगी per day for 2x days, and we know उसका रेट है 2 units per hour. So Renu जो काम करेगी वो होगा 2 into 2x into 2 units per hour, प्लस सीमा काम करेगी 4 hours per day for x days, और उसका रेट है 3 units per hour, तो उसका जो काम होगा will be 4 into x into 3, and put together this has to be 120, and solve this for x. So it will become 8x plus 12x. So 20x have 120, giving you x as 6. So हमें पूछा है number of days for which Seema will work. Number of days for which Seema will work is that x. So answer is 6 days. Okay? So if you read the question carefully, it is nothing difficult. Sometimes maybe reading the question itself becomes problematic for students. वो अगर पढ़ते वक्त समझ में नहीं आया सब कुछ, वो double the number of hours, double the number of days and वो सब,
तो फिर क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है, अदरवाइज देयर इज नथिंग रियली डिफिकल्ट इन दिस. रीड द क्वेश्चंस केयरफुली. आयशा, सीमा का रेट जो है वो 3 यूनिट्स पर आवर है. तो वो अगर 4 घंटा काम करती है पर डे फॉर एक्स नंबर ऑफ डेज, शी विल बी डूइंग 3 यूनिट्स एवरी आवर. सो टोटल जिसका जो काम होगा विल बी 4 इंटू एक्स इंटू 3. ठीक है. सो इफ एनीवन वांट्स स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, क्विकली डू सो. लेट्स डू अनदर कैट 24 क्वेश्चन. लास्ट ईयर का एक और करते हैं. This is from slot 2, cat 24 slot 2. Try this out. Can we do some difficult questions? मतलब कि अभी current we are doing the cat questions only. We cannot go beyond what is asked in the exams, right? What exactly you mean by difficult questions? अभी aptitude exam arithmetic में इससे difficult क्या करेंगे अभी? लास्ट ईयर जो कैट में 3 क्वेश्चंस आए थे टाइम एंड वर्क के, वो यही 3 है. ये जो एक किया अभी कैट 24 स्लॉट 1 का, दिस इज स्लॉट 2 का. एंड स्लॉट 3 में इफ यू रिमेंबर, वो जो पेयर्स में पर्सन्स काम कर रहे थे, ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड ए, वो वाला क्वेश्चन स्लॉट 3 में था. So that's it. इससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ आता ही नहीं एग्जाम में. सो व्हाट एल्स. Yes, anyone getting this answer? $139. Karan is saying 139. Anyone else getting the answer? Check करो. ठीक है. So only couple of students have answered. बाकी सबको आ रहा है कि नहीं? Karan wants more difficult questions. बाकी तो आंसर ही नहीं दे रहे कोई. सॉल्विंग ठीक है. हाँ ठीक है. ट्राई कर रहे हो ना? गुड. ठीक.
ठीक है, 139 is the correct answer. Good. Okay, so let's see this question. There are three persons, Amal, Vimal, and Sunil. Amal and Vimal together can complete a task in 150 days. Let's assume their rates as A, V, and S. Amal does A units per day, Vimal does V units per day, Sunil does S units per day. तो अमल और विमल जब साथ में काम करेंगे, they can complete a task in 150 days. तो अमल विमल 150 days में कितना करने वाले हैं? अमल will do 150 times A and Vimal will do 150 times V. Let's assume the total work itself as 300 units for convenience. Okay. Why 300? क्योंकि अमल एंड विमल 150 दिन में काम खत्म करते हैं, विमल सुनील 100 दिन में. ठीक है, तो 150 और 100 का मैंने एलसीएम ले लिया है 300 यूनिट्स. लेट वर्क बी 300 यूनिट्स. Now once you take the work as 300 units, तो अमल एंड विमल वो जो 150 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, मतलब पर डे दे मस्ट बी डूइंग 2 यूनिट्स. 300 यूनिट अगर 150 डेज में किया है उन्होंने, तो पर डे दे मस्ट बी डूइंग 2 यूनिट्स. सो A प्लस V मस्ट बी 2. अमल और विमल का रेट ऐड होके 2 होता है. ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग ना, बेसिक अप्रोच. हमने वर्क को अज्यूम किया 300 यूनिट. राज, क्यों 300? बिकॉज ये अमल एंड विमल 150 दिन में खत्म कर रहे हैं, विमल एंड सुनील 100 दिन में. तो वो 150 और 100 दोनों का कॉमन मल्टीपल ले लिया है 300 यूनिट्स. So once you have assumed that the work is 300 units, Amal and Vimal have done that 300 units in 150 days. Means per day they must be doing 2 units. So Amal और Vimal का rate जो है per day add होके वो 2 आता है. वैसे ही Vimal and Sunil can together complete the same task in 100 days. 300 यूनिट अगर 100 दिन में करते हैं, मतलब उन दोनों का रेट मिला के होना चाहिए 3. So Vimal and Sunil का रेट मिला के हो गया 3. ठीक है. And next condition tells us Amal starts working on the task, works for 75 days. Then Vimal takes over and works for 135 days. Finally, Sunil takes over and completes the remaining task in 45 days. तो एक के बाद एक अगर वो तीनों ने काम किया, अमल 75 डेज काम करेगा, उसके बाद विमल 135 डेज और फिर सुनील 45 डेज. तो दे आर एबल टू कंप्लीट द टास्क. तो आपका जो तीसरा इक्वेशन होगा वो हो जाएगा 75 इंटू ए. अमल 75 डेज काम करेगा, तो उतना काम अमल करने वाला है 75 ए. विमल काम करेगा 135 डेज, चलिए 135 वी. और उसके बाद सुनील काम करेगा 45 डेज, सो 45 एस. एंड दिस पुट टुगेदर हैज टू बी द टोटल वर्क 300 यूनिट्स. दिस इज योर थर्ड इक्वेशन. ये आप रिड्यूस कर सकते हैं. यू कैन डिवाइड थ्रू आउट बाय 15. सो यू गेट 5a plus 9v plus 3s is equal to 20. And now you can solve these three equations and get the a, v and s values. And then the question is done. ठीक है. तो now to solve these equations, what you can do is ये पहले इक्वेशन को into 5 कर दो, दूसरे इक्वेशन को into 3 कर दो और ऐड कर दो. So first equation I'm doing into 5, second equation into 3 and adding these together.
तो पहला इक्वेशन इंटू 5 करके 5a मिल जाएगा, यहां पे आएगा 5v, ये दूसरे इक्वेशन में होगा 3v, 5v प्लस 3v हो जाएगा 8v, एंड यहां पे सेकेंड इक्वेशन को इंटू 3 करके आएगा 3s, राइट हैंड साइड को होगा 2 इंटू 5 10 प्लस 3 इंटू 3 9, सो 10 प्लस 9 से 19. Let's call that as equation number 4. And now do equation 3 minus equation 4, तो वो 5a और 3s कैंसिल हो जाएंगे, आपको v का वैल्यू मिल जाएगा 1. Once you know v is 1, by substituting in this first equation, a will become 1 and s will become 2 when you substitute in this second equation. So a is 1 and s is 2. तो आपको अभी तीनों के रेट मिल गए हैं 1 1 2. आयशा टू सॉल्व द इक्वेशंस, अभी वो इंटू 5 क्यों किया वगैरह क्या पूछ रहे हो? अभी इधर 5a था ना, मुझे उसको हटाना है तो ये इसको 5 बनाना था, इसलिए इंटू 5 किया. इधर 3s है, उसको हटाने के लिए ये s को इंटू 3 कर दिया है, and then we could subtract and get rid of those a and s. This is simply solving of equations. You don't have to do it in this fashion only. आप कैसे भी solve कर लो. You have 3 variables, 3 equations. You solve it in some other way, however you want. Okay. Equation कैसे solve करना है? Everyone knows. However you want, you can proceed. Get the a, v, and s values. Now that we know the rates, look at the final part of the question. The final part of the question, अभी यहाँ से पढ़ते आगे. From here onwards, if Amal had started the task alone and worked on all days, Vimal had worked on every second day, and Sunil had worked on every third day, तो in how many days would the task been completed? तो अभी आगे आपको पैटर्न एक दिया है. तो पैटर्न ऐसे है. Amal had started the task and worked on all days. Amal every day काम करता है. तो डे 1 पे अमल होगा, डे 2, डे 3 and so on. So every day Amal works. Amal works daily. Whereas Vimal had worked on every second day. Vimal रोज नहीं काम करता. Vimal has worked only on every second day. So Vimal day 2 पे होगा, day 4 पे होगा, day 6 पे होगा and so on. So Vimal works on every second day. Day 2, day 4, day 6 and so on. Sunil had worked on every third day. Sunil भी रोज नहीं काम करेगा. Sunil will work on every third day. So day 3 पे Sunil होगा, day 6 पे Sunil होगा. तो ऐसे पैटर्न से वो काम कर रहे हैं. So now the repeating pattern will be of these 6 days. ये जो 6 दिन में काम होने वाला है, that will continue happening every 6 days. Okay? अगर अमल रोज काम कर रहा है, विमल every second day and Sunil every third day, ये जो 6 दिन का पैटर्न है वो हर 6 दिन में रिपीट होगा. So this 6-day pattern will repeat. We know Amal ka rate has 1. So whichever day Amal is working, he'll do 1 unit. Vimal ka rate है 1 and Sunil का rate है 2. So day 1 सिर्फ अमल काम करता है तो बस उस दिन एक ही यूनिट काम होगा. Day 2 पे अमल और विमल है, so 1 plus 1 2 units. Day 3 पे अमल एंड सुनील, अमल एंड सुनील मतलब 1 plus 2 3 units होने वाले हैं उस दिन. Day 4 पे वापस A and V will be 2 units.
डे 5 पे अमल अलोन विल बी 1 यूनिट एंड डे 6 पे तीनों है, सो 1 + 1 + 2 ऐसे 4 यूनिट होने वाले. So the total amount of work that gets done is 13 units every 6 days. थर्टीन यूनिट्स काम होते रहेगा हर 6 दिन. हमें काम टोटल करना है 300 यूनिट्स. टोटल वर्क 300 यूनिट है. तो अगर हर 6 दिन में 13 यूनिट्स होते हैं, 300 खुद तो 13 का मल्टीपल है नहीं. सो गो टू अ मल्टीपल ऑफ 13 बिलो 300. मल्टीपल ऑफ 13 बिलो 300 इज 299. अभी 13 को कितने से मल्टीप्लाई किया है टू गेट 299? इट इज 13 इंटू 23. तो हमने ऐसे 23 साइकिल्स लिए हैं 6 दिन के. 6 दिन के 23 साइकिल्स रिपीट करोगे तो फिर वो 13 यूनिट्स 23 टाइम्स होके 299 यूनिट्स हो जाएगा. सो द नंबर ऑफ डेज विल बी 23 इंटू 6. 23 इंटू 6 विल बी 120 and 18. So 138 days. ठीक है. और ऐसे 23 साइकिल्स कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट फ्रेश साइकिल होगा वो वापिस नेक्स्ट डे पे ए आने वाला है काम करने के लिए. सो डे नंबर 139. So day 139, A will work alone on that day. And he will do 1 unit. और फिर वो 1 यूनिट होने के बाद टोटल 300 यूनिट काम खत्म हो गया. That means day 139 is the last day. So total number of days required to complete the work is 139. Can you say answer of 10? मतलब क्या? I did not get what you are saying. I can say answer of 10 as in you want question number 10 का answer? 21. Yes, 21 is the answer. ये क्वेश्चन में कोई डाउट्स? एवरीवन गॉट दिस? क्वेश्चन नंबर 12. How much time it takes for this to solve? Maybe 1 minute, 1.5 minute maximum, depending upon how much effort you have put in the practice part. Those who have practiced well should be able to do this in 1 minute maximum. जिसका प्रैक्टिस अब तक हुआ नहीं उसको 2 मिनट 3 मिनट तक लग सकते हैं. 3 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए. 3 minutes should be the upper limit absolute. Yes, Aryan, we already have done question number 10 ना. ये हमने देखा है ना. 21 is the answer. Sir, Yes. but I am saying like I got the answer, but according what I have saw, I'm not getting 21 as the answer. I've written in the chat, sir, how I have solved it. So हाँ सर 21 कैन नॉट बी ना, वही आप बोल रहे हो ना. हाँ. तो वही तो पूछा ना आपको, अच्छा. व्हाट कैन नॉट बी द नंबर ऑफ डेज. Oh, sorry, sir. Okay, thank you, sir. So either the days have to be less than 21 or greater than 13 1 by 8. That is what we get. So question number 12. This is the first slide and this is the second slide. रेट्स तो हमने बस ए वी एंड एस अज्यूम किए हैं उनके रेट्स को. वर्क को हमने 300 यूनिट लिया था. अमल एंड विमल कैन डू द टास्क इन 150 days.
तो मतलब उनका combined rate per day must be 2. If they do 300 units in 150 days, per day they must be doing 2 units. So A plus V is 2. Okay, Raj, ऐसे हमने equations ये बनाए हैं. Read the question, you will see all these three conditions are directly given to us. Sure, next. This is from a slightly older CAT paper. Try this out. Actually, a very easy question. If you just read it carefully, you should be able to answer. Don't get bogged down in too many numbers. वो numbers पे ज़्यादा focus मत करो. उसमें जो important numbers है वो आपको identify करने आने चाहिए. देखो, try it out. This is the second slide, Aisha. Okay. Try this out. Everyone get the answer quickly. Okay, good. Himanshu and Karan have answered already. Yes, Shubham, correct. Good. Correct. Arman also has got the answer. Yeah, correct. So यहाँ पे दो लोग हैं A and B. Working together, they can build a wall 221 meter long in 11 1/9 days. If they work on alternate days, with A starting the work, it takes 22 1/4 days to build the same wall. तो साथ में काम किया दोनों ने, तो 11 1/9 days में काम खत्म होता है. Alternate day काम किया, A ने start किया तो it takes 22 1/4 days to build the same wall. If A and B work together and build a similar wall but of twice the length and earn a total of rupees 1800 for it, then B's share of the earning will be how much? अभी इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स अननेसेसरली फोकस ऑन द लेंथ ऑफ द वॉल 221 meters, फिर सिमिलर वॉल विद ट्वाइस द लेंथ. ये सब चीजें डोंट मैटर इन द क्वेश्चन एट ऑल. वो वॉल का लेंथ क्या है, वो नया वॉल जो बिल्ड कर रहे हैं इट इज ट्वाइस द लेंथ, वो सब कुछ मैटर नहीं करेगा. बिकॉज हमें पूछा क्या है, टोटल 1800 रुपए में बी का शेयर कितना होगा. उनको जो टोटल 1800 रुपए मिल रहे हैं उसमें बी का शेयर, अभी वो टोटल 1800 में से बी का शेयर अगर आपको जानना है, हमें क्या चाहिए, ए एंड बी के रेट का रेशियो. सो वंस यू गेट द रेट का रेशियो देन यू कैन फाइंड आउट इजीली 1800 में से बी को कितना मिलने वाला है. द मनी विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ द रेट्स. सो योर अल्टीमेट गोल इज टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द रेट्स. लेट अस अज्यूम ए का रेट है स्मॉल ए एंड बी का रेट है स्मॉल बी. अभी पहले केस में दे आर वर्किंग टुगेदर. तो जब दोनों साथ में काम करते हैं दे टेक 11 1/9 days.
अगर 11 1/9 days ले रहे दोनों साथ में, मतलब each of them has worked for 11 1/9 days, मतलब A ने काम किया होगा 11 1/9 days, so the amount of work that A will do will be 11 1/9 into A. वैसे B ने भी काम किया होगा 11 1/9 days, so B ने जो काम किया होगा 11 1/9 into B, and this put together is the total work. टोटल वर्क इतना है। ये समझ में आया सबको? 11 1/9 A plus 11 1/9 B is the work done together. Now, second case में they are working on alternate days. And alternate days में when they start with A, it takes 20 to 1/4 days to build the same wall. अगर वो 20 to 1/4 नहीं होता, अगर 22 days कहा होता, so 22 days अगर काम करते हैं, day 1, day 2, day 3, day 4, ऐसा जाएगा day 22 तक। तो ऑल्टरनेट डे स्टार्टिंग विथ ए, मतलब फर्स्ट डे पे ए काम करेगा, सेकेंड डे पे बी, थर्ड डे पे ए, फोर्थ डे पे बी, ऐसे डे नंबर 21 पे होगा ए, डे नंबर 22 पे होगा बी। So how many days A would have worked? 11 days। अगर 22 दिन होते, 22 दिन अगर ऑल्टरनेटली काम करते हैं, तो उसमें से 11 दिन ए काम करता, 11 दिन बी काम करता। बट द एक्चुअल डेज आर नॉट 22, इट इज एक्चुअली 22 1/4, मतलब डे नंबर 23 भी थोड़ा सा काम हो रहा है। डे नंबर 23 1/4 दिन काम हो रहा है, वो पूरा दिन नहीं काम हो रहा है। डे 23 सिर्फ 1/4 यूज हो रहा है, बट वो एक्स्ट्रा जो 1/4 पार्ट होगा वो ए आने वाला है काम के लिए। अगर 22 डेज में ही काम खत्म होता तो A would have worked 11 days, B would have worked 11 days. But since there is an extra 1/4 day, that extra 1/4 day A काम करने वाला है। तो जब alternate days में काम कर रहे हैं तो A वो extra 1/4 day काम करने वाला है। So A would have worked for 11 1/4 days and B would have worked for 11 days. ये पार्ट समझ में आ रहा है क्या? चेक करो। When they work together, 11 1/9 days लगा है, मतलब each of them has worked for 11 1/9 days. but जब alternate days काम करते हैं and time 20 to 1/4 days लगा है, वो 22 अगर होता तो उसमें 11 दिन A काम करता है, 11 दिन B, but 22 1/4 है, मतलब that extra 1/4 day जो है वो A के लिए वापस एक्स्ट्रा आने वाला है। So A would have done 11 1/4 days and B would have done 11 days. तो वो जो काम होगा will be 11 1/4 into A plus 11 into B, and that is the work done. Is this part clear? 11 1/4 A होगा and 11 days B होगा. Now in both the cases work done तो same ही है, so you can just equate the left hand sides, and once you equate the left hand sides you'll get the A and B ratio. So this actually is something that you should do it in 10-20 seconds. You just have to equate these two left hand sides and you'll get the answer. So the question is not very difficult to solve. You just have to realize this कि जब दोनों साथ में काम करते हैं, each of them will work for 11 1/9 days, and जब alternate day काम करते हैं, 22 days में से 11 दिन A काम करेगा, 11 दिन B, but extra 1/4 day जो है वो A करने वाला है, so A will do 11 1/4 days. ठीक है? So equate the left hand side, so that I'll do on the next slide. So we'll have 11 1/9 A plus 11 1/9 B is equal to 11 1/4 A plus 11 B. So we'll take this 11 B to the left and 11 1/9 A to the right. Left hand side पे आएगा 11 1/9 B minus 11 B. राइट हैंड साइड पे आएगा 11 1/4 A
minus 11 1/9 है. Now this will become 1/9 b. This 11 minus 11 will cancel out. 1/4 minus 1/9 will be 5/36. We'll get the A upon B ratio. This 9 will cancel with 36. So A upon B will become 4/5. तो A एंड B का जो रेट है काम करने का, उसका रेशियो है 4:5. अगर उनका काम करने का रेट का रेशियो 4:5 है, एनी अमाउंट दैट दे गेट पेड विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम इन द रेशियो 4:5. तो उनको जो 1800 रुपए मिलते हैं, वो 1800 रुपया डिस्ट्रीब्यूट होगा उनमें 4:5 रेशियो में. This 1800 when you distribute in the ratio 4:5 between A and B. B का शेयर कितना है ये आपको पूछा है. तो B का शेयर is going to be 5 parts out of total 9 parts of 1800. 1800 के 9 parts करो और उसमें से 5 part B को मिलेंगे, which will be 1000. That is the final answer to this question. 1000. Okay, so go through this. Let me know if there is any doubt. So those who want screenshot of this first slide, quickly do so. The second slide. If you are finding this kind of basic processing, ये equation जो solve किया है, A by B ratio निकालना, ये सब difficult लग रहा है, तो that means practice बहुत ही कम हुआ है अब तक. Start working on basic solving. Once you have realized what is the logic of the question, the processing should not take more than few seconds. इसमें bogged down नहीं होना है बिल्कुल. That processing should happen very, very fast. So practice thoroughly. Done? Next question try कर लो. This is another slightly older CAT question. Try this out. Try the next one. Question number 14. Yes, anyone got this answer? ठीक है, चलो, do at your own pace. Everyone try it out. Good. Those who said 15 is the correct answer. Yes.
Let's see this question. So here there are three persons, Ram, Shyam and Tarun, and they can complete the work in 24 days, 36 days and 30 days respectively. हर एक के लिए इंडिविजुअली कितना टाइम लगता है वो आपको दिया है. So for such questions we assume the amount of work. You can take work as 1 unit if you want, or you can take it as LCM. So here I'll do this by LCM method. So we'll assume the work as LCM of those numbers. So LCM of 24, 36 and 30. तो वो आ जाएगा 360. 720 is a common multiple, but lowest is 360. You can take 720 if you want, Raj, or you can work with the smaller number 360. तो वर्क 360 यूनिट्स लिया तो ये तीनों के रेट्स क्या है वो मिल जाएंगे. So Ram, Shyam, Tarun. We know Ram takes 24 days to complete. Shyam takes 36 days to complete. Tarun takes 30 days to complete. 360 यूनिट्स अगर 24 डेज में कर रहा है तो मतलब राम का रेट होगा 360 by 24 is 15. So राम does 15 यूनिट्स एवरी डे. वैसे शाम हो जाएगा 10 यूनिट्स पर डे एंड तरुण हो जाएगा 20 यूनिट्स पर डे. सॉरी नॉट 20, 12 यूनिट्स पर डे. ठीक है, तो ये तीनों के रेट्स मिल गए. उसके आगे टाइमलाइन बनाते हैं. So what they said is all three started working together. तीनों ने साथ में काम चालू किया. So RST, all three are working together. After X days Ram left, मतलब ये तीनों ने काम X days के लिए किया है. उसके बाद राम लेफ्ट मतलब आगे होगा श्याम एंड तरुण. SNT will work further. फिर का है श्याम लेफ्ट X days before the work was completed. श्याम लेफ्ट X days before the work was completed. मीन्स एंड के लास्ट X days जो है वो तरुण अकेला काम कर रहा है. So this is Shyam left X days before the work was completed. We also know the work was completed at the end of T days. जो total time period है वो T days का है. तो start से लेके end तक the total period is of T days. That means that in between period जहां पे S and T are working together will be T minus 2x days. ये period T minus 2x days का होगा. ठीक है, हमें पता है x and t are integers. What is the value of t? So now let's find the total work done. So that total work done will be पहले x days के लिए RST तीनों काम करेंगे तो उनका रेट ऐड हो जाएंगे. जब तीनों साथ में काम कर देंगे the rate will become 37 units per day for x days. So 37 into x. उसके बाद S and T जब साथ में काम करेंगे उनके रेट्स ऐड हो जाएंगे. 10 plus 12 हो जाएगा 22 and they are working for T minus 2x days. And finally last x days के लिए T अकेला काम करेगा तो उसका रेट है 12 units per day for x days. So 12 units per day for x days. All this put together has to be the total work that we have assumed as 360. So here when we simplify 37 plus 12 हो जाएगा 49 minus 44. So हो जाता है 5x. And this will be plus 22t. Okay. So 5x plus 22t is 360. Now here when we take 22t to the right, we can say 5x will be 360 minus 22t. Now notice that this 360 is divisible by 5. So if we divide throughout by 5, this is what we'll get. I'll write on the next slide. 5x,
था 360 minus 22t. So if we divide throughout by 5, we'll get x. 360 by 5 करोगे तो आता है 72 minus 22 by 5t. Now x is an integer, 72 is an integer. मतलब ये जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है 72 में से वो भी एक इंटीजर होना चाहिए. x तो हमें इंटीजर चाहिए, वो तो क्वेश्चन में दिया है x एंड टी आर इंटीजर्स. 72 इंटीजर है तो उसमें से जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो भी एक इंटीजर ही होगा टू गेट x एज एन इंटीजर. और ये टर्म जो है ये इंटीजर बनने के लिए t हैज टू बी डिविजिबल बाय 5. सो t नीड्स टू बी अ मल्टीपल ऑफ 5. तो आपने ये स्पेशल इक्वेशंस टॉपिक देखा होगा. Some of you may not have seen this. That's why I'm not using that idea. Special equations, just by basic observation, we can say that t has to be a multiple of 5. So t अगर 5 लिया, t खुद 5 लिया, multiple of 5. So if we take t as 5, so 5 will cancel out and we'll get 72 minus 22 से x as 50. Okay, but is x equal to 50 valid? तो नहीं, बिकॉज x अगर 50 ले लिया तो ये जो बीच में जो पीरियड है t माइनस 2x विल बिकम नेगेटिव. t अगर 5 है और x अगर 50 है तो ये t माइनस 2x जो है वो नेगेटिव हो जाएगा. टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसलिए वो पहला सॉल्यूशन इज इनवैलिड. इफ यू टेक t एज 10, t को 10 ले लिया तो इट विल बिकम 72 माइनस 22 इंटू 2 44. तो 72 माइनस 44 वो कितना आएगा 28. चेक करो ये वैलिड है क्या सॉल्यूशन. ये भी नहीं चलेगा बिकॉज अगेन t माइनस 2x जो है वो नेगेटिव हो जाएगा. यहाँ पे वो t माइनस 2x विल बी नेगेटिव. इफ यू टेक t as 15, then you will get 72 minus 22 3s are 66. So 72 minus 66 is 6. Okay, now is this valid? So yes, because if you take t as 15 and x as 6, this part is still positive. 15 minus 12 हो जाएगा 3 days. So yes, this is valid and this will be the only valid solution. इसके आगे आप अगर लोगे t को 20 ले लिया तो now you will get x as negative. You'll get 72 minus 88 say minus 16, which is not valid. So ये एक ही valid solution होगा. So t का वैल्यू 16 है, sorry 15 है and x का वैल्यू 6 है. So t has to be 15. So that is the answer. वेद ये जो बीच में जो पीरियड है t माइनस 2x वो नेगेटिव नहीं हो सकता ना. आप अगर t को 10 लेते हो और x अगर 28 है तो ये t माइनस 2x विल बी 10 माइनस 56. दैट कैन नॉट बी नेगेटिव. टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव. ठीक है. So anyone wants screenshot of this slide? Quickly do so. Done. This is the second slide. Done. ठीक. Try out this next question. Another slightly older cat paper question. Previous question again. ठीक है. CR, this was the previous question. This was the first slide. Second slide. Yeah, welcome. Try the next one. Question number 615. Try it out.
ठीक है, करेक्ट, गुड, 20 days is the answer. Good. Let's see a slightly different approach in which you can do these kind of questions. Check करते हैं इसको. There are three persons, A, B, and C. They have decided to complete a work together. Time taken by A alone to complete the work is 25% more than the time taken by B and C together to complete the work. So time taken by A is 25% more than time taken by B and C. अगर आपको किसी नंबर को 25% बढ़ाना होता है, how do you increase by 25%? What is the multiplier? 1.25. 25% मोर मतलब वो 1.25 टाइम्स होगा. 1.25 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे. 1.25 is nothing but 125 by 100 or 5 by 4. Multiplier of 1.25 in fraction form is 125 by 100 or 5 by 4. So time taken by A is 25% more than time taken by B and C together. ये आपको दिया 5 by 4 का मल्टीप्लायर होगा. This is 25%. So now we can say time taken by A and time taken by B and C together, ये जो रेशियो है वो 5 by 4 होगा. We know rate and time vary inversely. So अगर रेट ये टाइम टेकन का रेशियो 5 by 4 है तो उनके रेट का रेशियो हो जाएगा 4 by 5. सो रेट्स ए का हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं एंड बी एंड सी का स्मॉल बी एंड स्मॉल सी से, तो वो होगा 4 by 5. आई एम अज्यूमिंग दैट रेट्स आर स्मॉल ए बी एंड सी. तो ये पार्ट समझा है क्या? तो विल प्रोसीड फर्दर. गो थ्रू दिस फर्स्ट सेंटेंस केयरफुली. सेकंड सेंटेंस, time taken by A alone is 25% more than time taken by B and C together to complete the work. A का time 25% more है than B and C का time. 25% increase करना है मतलब 5 by 4 से multiply करना है. तो time taken by A and time taken by B and C together उसका रेशियो हो जाएगा 5 by 4, मतलब उनके रेट का रेशियो हो जाएगा 4 by 5. Ekta, which part you want me to repeat again? I am just repeating. Repeat करते वक्त ही बोल रहे हो. Repeat again. So you tell me specifically which part. Which part you are not getting out of this? ये जो मैंने लिखा हुआ है उसमें से क्या नहीं समझा? किसी नंबर को 25% बढ़ाना है. 100 को अगर आपको 25% बढ़ाना है तो क्या करते हो? 1.25 से मल्टीप्लाई होता है वो. ये आइडिया क्लियर है? ये 125 बनेगा ना, सो इंटू 1.25, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में वो क्या है? 5 by 4. तो आपको दिया है टाइम टेकन बाय ए अलोन इज 25% मोर देन टाइम टेकन बाय बी एंड सी. सो जो ए का टाइम है टी ए इज 5 by 4 टाइम्स ऑफ टाइम टेकन बाय बी एंड सी. मैंने टाइम टेकन बाय बी एंड सी इस टर्म को लेफ्ट में ले लिया है, तो आपको रेशियो मिल गया 5 by 4. एंड वी नो टाइम एंड रेट वेरी इनवर्सली.
तो अगर उनके टाइम टेकन का रेशियो है 5/4, रेट का रेशियो हो जाएगा 4/5। समझा? एंड जब बी एंड सी साथ में काम करेंगे उन दोनों के रेट ऐड होने वाले हैं, तो ए का रेट एंड बी एंड सी का रेट पुट टुगेदर वो रेशियो है 4:5। Now let's look at the next condition similarly. The next condition says the time taken by B alone is 40% more than the time taken by A and C together. B alone का जो टाइम है it is 40% more than A and C together. अभी किसी नंबर को 40% बढ़ाना है, what is the multiplier for 40% increase? 1.4, right? 40% बढ़ाना मतलब into 1.4 करना, and that 1.4 in fraction form is 14/10. 14/10 होता है 7/5. So 1.4 is nothing but 7/5. So time taken by B alone is 40% more. So मतलब into 7/5 करना है of time taken by A and C together. ये आपको second condition में दिया है. So you can say time taken by B upon time taken by A and C together. ये ratio है 7/5. Again, time taken ratio is the inverse of the rate ratio. So उनका जो rate का ratio हो जाएगा वो हो जाएगा 5/7. So B का rate upon A and C का rate put together होना चाहिए 5/7. ठीक है? So now let's assign them the rates. हमें इस रेशियो में, ये दोनों रेशियो में फिट होने वाले कुछ तो कन्वीनियंट नंबर्स लेने हैं. तो रेट्स के लिए आप कुछ भी नंबर ले सकते हो which fit these ratios. So how to now conveniently assume numbers? Let's understand that part. तो आपको तीनों को रेट्स असाइन करने हैं कन्वीनियंट वैल्यूज जो ये दोनों रेशियोज में फिट हो जाएंगे. तो आपको अभी क्या नोटिस करना है, द फर्स्ट रेशियो स्प्लिट्स 4:5. मतलब हमें टोटल जो भी है उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है. टू गेट द रेशियो 4:5 हमें 9 पार्ट्स लेने हैं टोटल के, और सेकेंड रेशियो में वो जो भी टोटल होगा उसके 12 पार्ट्स करवाने हैं. 5:7 स्प्लिट करवाने के लिए वो टोटल के 12 पार्ट्स करने हैं. तो ऐसा नंबर कोई सोचो जो कन्वीनियंटली 9 में डिवाइड होता है एज वेल एज 12 में. Which number is divisible by both 9 as well as 12? Divisible by 9 as well as 12. Not divides 9 and 12. Divisible by 9 and 12. तो 36. तो जो तीनों का टोटल रेट है वो 36 अज्यूम कर लो. तो टोटल अगर 36 है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रेशियो वो 4:5 स्प्लिट करना है. तो वो 36 को जब आप 4:5 स्प्लिट करोगे उसके 9 पार्ट्स करेंगे तो each part will be 4, तो 4 parts will be 16 and 5 parts will be 20. तो वो A का रेट हो जाएगा 16 and B and C का मिला के 20. सेकेंड रेशियो में उसी 36 को आपको स्प्लिट करना है 5:7. 5:7 स्प्लिट करना है तो उसके 12 पार्ट करने हैं. 36 के 12 पार्ट करोगे तो each part will be 3, so 5 parts will be 15, 7 parts will be 21. So वो 36 B में जाएगा 15 and A plus C is 21, मतलब C is 5. So now we have got all the three rates properly assigned. So now you can see 16, 15, 5 जो है वो add होके total 36 बनता है and it will fit both the ratios. A upon B plus C is 4/5 and B upon A plus C is 5/7. Check कर लो. So this is how you can conveniently assign those rates. ये समझा हमने रेट्स कैसे असाइन किए. ये जो दोनों रेशियोज मिले हैं रेट्स के वो दोनों में फिट होने वाले हमने नंबर्स डिसाइड किए. वो नंबर आप कुछ भी ले लो, एज लॉन्ग एज दे फिट दिस रेशियोज यू विल गेट द करेक्ट आंसर. Now, once you have designed these as the rates, then we know C alone takes 144 days to complete the work. C अकेला काम करता है तो 144 days लेता है. So now we can decide the amount of work.
the amount of work done, C का rate है 5 units per day and he takes 144 days. So 5 into 144 units. And once you know this is the amount of work, we have to find the time taken by all three of them together to complete the work. तो जब तीनों साथ में काम करेंगे, the time taken together will be how much? So we know time taken will be the total work divided by their combined rate, which is 36. So हो जाएगा 5 into 144 by 36. So 20 days. तो तीनों को साथ में 20 दिन लगेंगे. Option C is the answer. कश्यप, ये हमें दो जो सेंटेंस दिए है उससे हमें ये रेट्स का रेशियो मिल गया, वो समझा? A and B plus C, that ratio has to be 4:5. B upon A plus C, that ratio has to be 5/7. हाँ, तो हमें अभी कन्वीनियंट नंबर्स चाहिए जो ये दोनों रेशियो में फिट हो जाएंगे. जैसे क्या कन्वीनियंट नंबर्स ले सकते हैं जो ये दोनों रेशियो में फिट हो जाएंगे, ये आपको डिसाइड करना है. तो अभी हम कैसे सोच रहे हैं इसके बारे में? What we are doing is, first of all, we know that A, B, C जो भी total rate होगा, in the first ratio, it is getting divided in the ratio 4:5. तो पहले रेशियो में उसके 9 पार्ट्स बनने वाले हैं. दूसरे रेशियो में it is getting divided in the ratio 5:7. मतलब उसके 12 पार्ट्स बनने वाले हैं. तो हम ऐसा ही कन्वीनियंट टोटल नंबर ले रहे हैं जिसके 9 पार्ट्स भी कर सकते हो और 12 पार्ट्स भी. तो 9 and 12 दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर है 36. That is why we assume the total of A, B, C put together is 36. Now that 36 we are now first splitting in the ratio 4:5. 36 को 4:5 split करना है, मतलब उसके 9 parts करने हैं. So every part will be 4. So this 4 parts will be 16 and 5 parts will be 20. So that A के लिए corresponding जो rate है वो 16 आ जाएगा. ठीक है. फिर उसी 36 को आपको स्प्लिट करना है 5:7. तो 36 को 5:7 स्प्लिट करना है, मतलब 12 पार्ट्स करने हैं. सो 36 के 12 पार्ट्स करोगे तो ईच पार्ट विल बी 3. सो 5 पार्ट्स विल बी 15, 7 पार्ट्स विल बी 21. So that B value must be 15 and C will be the balance 5, and you will see everything now fits. ठीक है, ऐसे हमने ये वैल्यूज अज्यूम किए. So those who want screenshot of this, quickly do so. Try this question number 16. This is CAT 21 slot 2 question. लास्ट 4 साल में ये एक ही क्वेश्चन था जहां पे पाइप्स एंड टैंक्स के टर्म्स में क्वेश्चन पूछा है. रुचि का क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन में दिया है C कैन कंप्लीट द वर्क इन 144 डेज, ये दिया है. अभी C का रेट अगर 5 है एंड अगर वो 144 डेज में काम खत्म करता है, टोटल वर्क विल बी 5 into 144. So this was the only pipes and tanks based question in the last 4 years. Try this out. करण, अभी तो अरिथमेटिक चालू है, सो आगे एक एक करके टॉपिक जब होंगे एंड में वो होगा. समवेयर इन अक्टूबर, मिड अक्टूबर हो जाएगा. अरिथमेटिक होने के बाद नंबर्स का वर्कशॉप होगा, फिर ज्योमेट्री, उसके बाद अलजेब्रा के 3-4 वर्कशॉप होंगे.
This was the previous slide, Radha. (144). ठीक है, some of you are answering 144 minutes. चेक कर लो सब लोग फटाफट. It's a very straightforward, simple question है. ध्यान से पढ़ोगे. Not very difficult to answer. Pipes and tanks में one thing that you have to be careful about is there may be two types of pipes: filling pipe, draining pipe. फिलिंग पाइप का रेट अगर आपने पॉजिटिव लिया है तो ड्रेनिंग पाइप का रेट नेगेटिव ले लो. ठीक है, दोनों टाइप के जो पाइप्स है एक का रेट पॉजिटिव लेना है, दूसरे का नेगेटिव. विच वन यू वांट टू टेक पॉजिटिव, विच वन नेगेटिव, द चॉइस इज योर्स. बट यूजुअली इट इज अ गुड आइडिया टू टेक filling pipes positive rates and draining pipes as negative rates. So in this question, there are two pipes A and B. They're attached to an empty water tank. Pipe A fills the tank while pipe B drains it. So let's assume their rates. A के लिए प्लस A एंड B के लिए माइनस B. ये फिलिंग पाइप है इसलिए पॉजिटिव रेट, ये ड्रेनिंग है इसलिए नेगेटिव रेट. So this many units they fill and drain respectively per hour. आपको दिया है if pipe A is opened at 2 p.m. and pipe B is opened at 3 p.m. the tank becomes full at 10 p.m. तो पाइप A कितने घंटे काम कर रहा है? From 2 p.m. to 10 p.m. 2 p.m. to 10 p.m. मतलब 8 घंटे. So pipe A जब 8 घंटे काम करता है, it will fill up 8A units. Pipe B was opened at 3 p.m. B 3 p.m. से लेके 10 p.m. तक काम कर रहा है. 3 p.m. to 10 p.m. will be 5 hours. तो वो 5 घंटे में, sorry not 5 hours, 7 hours. So 3 p.m. to 10 p.m. is 7 hours. तो वो 7 घंटे में it will remove out minus B into 7 और minus 7B. इतना पानी वो बाहर निकालेगा. ठीक है, and this put together has to be the capacity of the tank. Second condition, instead if pipe A is opened at 2 p.m. pipe B is opened at 4 p.m. the tank becomes full at 6 p.m. तो अभी पाइप A को 2 बजे खोला है, तो that means it is working from 2 p.m. to 6 p.m. 4 hours. So it will fill up 4A. पाइप B को 4 बजे ओपन किया था, so 4 p.m. to 6 p.m. it is working for 2 hours. So minus 2B. इतना वो empty करेगा. And this again has to be the capacity of the tank. The tank becomes full at 6 p.m. So put together, this is the capacity of the tank. Now we can equate these two. So by equating these two, we'll get 8A minus 7B is equal to 4A minus 2B, giving us 4A is equal to 5B. तो A and B का रेशियो आपको मिल जाएगा 5/4. Once you know A and B का रेशियो है 5/4, let us assume the rates as 5 and 4 themselves. So A का जो रेट है वो 5 लेते हैं, B का रेट 4. And B is draining इसलिए -4. So now the capacity, you can use any of these equations to get the capacity. So if I use that second equation, capacity हो जाएगा 4 times 5 20 minus 2 times 4, so minus 8 is 12 units. So tank का capacity 12 units है. If pipe B is not opened at all, then the time taken in minutes to fill the tank is how much? So अगर पाइप भी ओपन नहीं किया तो A को कितना टाइम लगने वाला है ये आपको पूछा है. So A का टाइम टेकन will be the capacity of the tank upon A का rate which is 5.
So 12 by 5 hours. To convert this to minutes, multiply with 60. So 12 by 5 into 60 will become 144 minutes. That is the answer. Okay? So again, CAT ke question doesn't mean that everything is difficult. You can get such simple questions also on the CAT exam. All questions are 3 marks. So you should be able to identify these and solve these. Raj, there is no short break now. You already taken a half an hour break. और कितना break चाहिए? The session will end at 6:30. Okay, those who want screenshot of this, quickly do so. Done? Yeah. This is a slightly older CAT question. Try this out. Another question based on pipes and tanks. Slightly more challenging, not very difficult. थोड़ा सा और conditions है. देखो. Try it out. Last question. This was the last question. I'll go through that. 4:24 p.m. Yes, correct. Good. सर बोलो. सर इस क्वेश्चन में आपको 20 माइनस 8 कैसे मिला? दैट माइनस 8 का पार्ट मुझे नहीं समझा. हमने ए और बी के रेट को 5 and 4 अज्यूम किया. वंस यू गेट अ रेशियो एज 5:4. अभी वो रेशियो 5:4 के कोई भी वैल्यूज ले लो एज द रेट्स. तभी यहाँ पे इस इक्वेशन में कैपेसिटी कितना है निकालने के लिए आई हैव पुट ए एज 5 and b as 4. So 4 5s are 20, 2 4s are 8. So 20 minus 8 से कैपेसिटी 12 आ गया. Got it? आपने इसमें सब्स्टिट्यूट किया होता तो भी चलेगा. 8 5s are 40 and 7 4s are 28. So 40 minus 28 से 12. Either way you will get that capacity as 12 units. Once you know capacity is 12, A का रेट जो 5 है उससे कितना टाइम लगने वाला है A को. चलो, let's see that question number 17. So question number 17. A tank is emptied every day at a fixed time. Immediately thereafter, either pump A or pump B or both start working until the tank is full. On Monday, A alone completed filling the tank at 8 p.m. So Monday ko it was A alone
and it completed at 8 p.m. On Tuesday के लिए it is B alone completed filling the tank at 6 p.m. So B alone worked till 6 p.m. Then on Wednesday, A alone worked till 5 p.m. and then B worked alone from 5 p.m. to 7 p.m. to fill the tank. So Wednesday को A, B दोनों को use किया है and A worked from A worked till 5 p.m. and उसके बाद B worked from 5 p.m. to 7 p.m. So B worked 5 p.m. to 7 p.m. to fill the tank. At what time the tank will be filled on Thursday if both pumps were used simultaneously all along? So Thursday को A and B together use करने हैं. तो Thursday को क्या टाइम पे tank full होने वाला है? So we know tank is emptied every day at a fixed time. Every day empty किसी fixed time पे होता है. Now let's say on that first day Monday को A को जो time लगा है is T hours. Okay, 8 p.m. तक एक जो fill करता है that time taken by A is T hours. So let A take T hours. कि हमें पता नहीं कितने बजे उसने चालू किया था काम, वो फिक्स टाइम पे एम्प्टी हुआ है एंड इमीडिएटली टैंक पाइप ए चालू किया था, बट कितने बजे चालू किया था पता नहीं. सो जो भी टाइम पे चालू किया था वहां से लेके 8 p.m. तक इट हैज टेकन T hours. So we know capacity is the rate into time. So from that first case we can say capacity जो है टैंक का will be the rate of A which I am taken as small a into the time T. Now for second day, अगर 8 बजे तक इट इज T hours, B ने तो 6 बजे तक काम खत्म कर दिया था. सो B ने कितना टाइम लगा लिया है? इट इज 2 hours lesser. A को अगर हमने T hours लिया है, मतलब B को जो टाइम लगा है up till 6 p.m. is 2 hours lesser. So B is taking T minus 2 hours. So from here we can say the capacity of the tank will be B का rate into उसको जो time लगा which is T minus 2. ठीक है, so B को 2 घंटे कम लगे हैं compared to A. अब ये थर्ड कंडीशन से कैपेसिटी कितना होगा? तो A work till 5 p.m. If A is working till 8 p.m. उसको हमने लिया है T hours. 8 बजे तक जब A काम करता है इट इज T hours. तो जब उसने 5 बजे तक काम किया है मींस A would have worked for T minus 3 hours. T से 3 घंटे कम है, तो A worked for T minus 3 hours. एंड उसके बाद B has worked from 5 p.m. to 7 p.m. 5 p.m. to 7 p.m. is 2 hours. So B ने काम किया 2 घंटे. So plus 2B. And this is the third equation that you'll get. In all three cases, that capacity that you have to fill, the tank का capacity तो same ही है. So you can equate. So equate 1, 2, and 3, and you will get the values that you can assume for A and B. That part I'll do on the next slide. So if I equate first condition with the third, so I'll get 80 is equal to, यहां पे जब ब्रैकेट ओपन होगा it will become 80 minus 3A plus 2B. दोनों साइड से 80 कैंसिल कर लो, ये माइनस 3A लेफ्ट में आ जाएगा, तो you'll get 3A is equal to 2B and you'll get the A by B ratio as 2 by 3. Once you know A by B ratio is 2 by 3, assume the rates as 2 and 3 themselves.
Now once you know rates are 2 and 3, using the first and the second equation, you can find the t value. So now equate 1 with 2. तो उससे हमें मिलेगा AT is equal to BT minus 2B, और you can just substitute A and B के लिए values जो हमने assume की है 2 and 3. So A and B को 2 and 3 substitute कर दिया, तो that first equation will become 2T and second equation मिल जाएगा 3 times T minus 2. And solve this for T. So this will give us T as 6. Once you know T is 6, मतलब वो पहले दिन अगर 6 घंटे लगे थे, means the tank is getting empty at what time? 8 बजे जब फिल हुआ था तभी 6 घंटे लगे थे, मतलब कितने बजे से फिलिंग चालू किया था? 2 PM. हाँ, so now we know tank is emptied at 2 PM every day. तो जो फिक्स टाइम है जिसपे वो टैंक एम्प्टी होता है एवरी डे इज 2 PM. तो 2 PM से 6 घंटे लगते हैं on that first day to fill up the tank. So now we know tank empties at 2 PM. Once you know the tank empties at 2 PM, you can also find the capacity. अभी वो capacity we know is A into T. A 2 है, T 6 है, so 12 units. So our final question है, थर्सडे को जब ये दोनों पाइप यूज करेंगे तो कितने बजे टैंक फुल होने वाला है? तो थर्सडे को जो टाइम टेकन टू फिल होगा when you use both the pipes together, the combined rate will be 5 units per hour. So time taken will be the capacity 12 units and the rate है 5 units per hour. So 12 by 5, that many hours. When you convert this to minutes, 12 by 5 into 60 हो जाएगा 144 minutes. तो 144 minutes लगने वाले हैं from 2 PM. 2 PM से 144 minutes मतलब 2 hours 24 minutes. So 2 hours 24 minutes मतलब 4:24 PM. So tank will get full at 4:24 PM. So tell me which part out of this you have not understood. Let me. मंडे को पाइप ए अलोन हैज टेकन T hours. वो 8 बजे तक फिलिंग करता है, और अगर 8 बजे तक T hours है, ट्यूसडे को जब पाइप बी 6 बजे तक फिल कर रहा है, उसको जो टाइम लगा है वो 2 घंटा कम लगा है. सो दैट इज T minus 2 hours. ओके, वहां से तो अभी कैपेसिटी तो सब केस में सेम ही है ना. सो वी हैव इक्वेटेड द कैपेसिटी विद कैपेसिटी. सो फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को इक्वेट कर लो तो आपको A एंड B का रेशियो मिल गया 2/3. एक बार A B का रेशियो 2/3 है तो यू कैन यूज द A एंड B वैल्यूज एज 2 and 3 itself. अब ये फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर लो. फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेट करके A एंड B को 2 and 3 सब्स्टिट्यूट किया तो T आ जाएगा 6 hours. Once you know T is 6 hours, मतलब क्या, वो जो पहले दिन A को टाइम जो लगा है वो 6 घंटे है. टाइम अगर A को 6 घंटे लगा था and we know it was full at 8 PM, means the filling must have started at 2 PM. So now we know every day the tank is emptying at 2 PM. ठीक है, समझा? अगर T 6 hours है और हमें पता है कि टैंक was full at 8 PM, मतलब फिलिंग कितने बजे चालू किया होगा? तो 6 hours पहले, मतलब 2 बजे टैंक एम्प्टी हुआ था. Also by plugging in T as 6 and A as 2, you get the capacity of the tank. AT will be 12. अभी कैपेसिटी 12 यूनिट्स है और आप दोनों पाइप साथ में यूज करोगे तो कितना टाइम लगने वाला है टू फिल द टैंक? तो कैपेसिटी 12 है, दोनों का मिला के रेट हो जाएगा 5.
So time required will be 12 by 5 hours, which when you convert to minutes, it is 144 minutes. So 2 PM से 144 minutes अगर लगने वाला है, 2 घंटा 24 मिनट हो जाएगा 4:24 PM. करेक्ट सीआर. दोनों जब साथ में काम करेंगे, the rates will get added up. Thursday को both pipes are used simultaneously. So those who want screenshot of this slide, quickly do so. This is the second slide. Done. Last 4 years में groups based question ये एक ही था. In fact, this same question has been repeated multiple times. Same question model, but nothing variation as such. यही exact model 2-3 बार repeated है last 4 साल में. आप पेपर देखोगे तो. So I've taken only one such example, but the same question type has been repeated multiple times. So when you have groups of persons and there are multiple groups with same type of workers in both the groups. Okay, so multiple groups with same type of workers. So the following formula can be utilized. So multiple groups है, लेकिन दोनों groups में same type of workers है. तो M1 D1 H1 by W1 is equal to M2 D2 H2 by W2. ये ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन हमने क्लास में डिराइव किया है. So this is something to do with the rates. When you have workers of same type in both the groups, the rates at which the workers are working is same. So through that we are able to establish this relationship. Here M1 M2 stands for number of workers in the two groups. D1 D2 stands for the number of days taken to finish. H1 H2 stands for hours worked per day. And W1 W2 is the amount of work done. So this relationship we have derived during class. So you can use that to quickly answer this question. अभी यहाँ पे there is a group of n people working on a project. तो पहला number of people है n. They finished 35% of the project. So work done by this first group is 35%. By working 7 hours a day. 7 hours a day, so H1 has 7. For 10 days, so D1 has 10. Thereafter 10 people left the group. 10 लोगों ने छोड़ दिया है. So you can see कि आगे जो group है उसमें the number of people will be n minus 10. Second group of persons n minus 10 लोग है क्योंकि 10 लोगों ने छोड़ दिया है. And the remaining people finish the rest of the project in 14 days. Now rest of the project W2 will be 65% of the work. अगर पहले ग्रुप ने 35% काम किया, rest of the project will be 65% of the work. And they have worked for 14 days, working 10 hours a day. So their hours per day हो गया है 10 and number of days है 14. And now you have to substitute in this formula and find the value of n. So now when you substitute in this formula, you'll get n into 10 into 7 by 35 is equal to n minus 10 into 10 into 14 by 65. 10 will cancel out from both sides. 7 2s are 14 होता है, वो cancel हो जाएगा. So perform the cancellations and you'll get the answer.
5 sevens are 35, 5 13s are 65. Cross multiply and solve for n. So you get n as 140. Correct. So this exact same model has been tested multiple times in the last 2-3 years. So those who want screenshot of this slide, quickly do so. Done? Sure. So those who want screenshot, do it. Next, we'll see some time and distance ke questions. Now, time and distance, of course, majority of the questions will be solving in the next class. Next जो arithmetic का workshop होगा, उसमें हम CAT के questions करेंगे. Today we'll just solve a few questions, 2-3 easy वाले questions देख लेते हैं. So try this out. 19A. Okay. So in this question, two trains are approaching each other at the speeds of 60 kilometers per hour and 80 kilometers per hour. Let's say this is train A. It is going this way at the speed of 60. And this is train B going this way at the speed of 80. They are approaching each other. So they are going in opposite directions. They are separated by a distance of 700 kilometers. उनके बीच में 700 किलोमीटर का गैप है. At the same time, a fly traveling at 200 kilometers per hour starts from the head of the first train and goes to the head of the second train and moves back and forth in this manner till the two trains meet. तो एक fly है which starts from the head of first train. It travels all the way till the head of the second train. But meanwhile, trains themselves are coming closer and closer. So fly का जो पहला ट्रिप होगा ये पूरा 700 किलोमीटर नहीं होगा, because as the fly starts flying, the trains also start moving. That means the first trip of the fly will be something less than 700 kilometers. So as soon as it meets the head of the second train, it will turn back, go and meet the head of the first train, again turn back, go and meet the head of the second train, and so on. तो ऐसे fly का path चल रहा है. It keeps flying back and forth between the two trains till the two trains meet. हमें चाहिए what is the total distance covered by the fly in kilometers. So now, in such kind of questions, if you think in terms of individual trips, then it becomes very difficult to find out that distance. हर individual trip अगर fly का count करते रहोगे, तो it will be a very difficult question to answer. But same thing can be found directly without finding the distances traveled in individual trips. What you need to find out is the time taken by the trains to meet. Trains को मिलने के लिए time कितना लगता है वो निकाल लो, ठीक है? And we have seen for such kind of questions, the time taken to meet depends upon the relative speed. तभी ये दो trains जो है, they are moving at what relative speed? They are going in opposite direction. And we know opposite direction में relative speed is the sum of the speeds. यहाँ पे relative speed हो जाएगा 60 plus 80, 140 किलोमीटर पर आवर. तो उनके बीच में जो गैप है वो इस रेट से कम होगा. हर घंटे में 140 से गैप कम होते रहेगा. तो वो 700 किलोमीटर का जो इनिशियल गैप है उसको जीरो करने के लिए द टाइम रिक्वायर्ड, द टाइम टेकन टू मीट विल बी 700 अपॉन 140. Just 5 hours. तो ट्रेन्स को मिलने के लिए 5 घंटे लगेंगे. And the fly keeps flying back and forth between the two trains for that entire 5 hours. तो ये पूरे 5 घंटे अगर फ्लाई
is flying at the speed of 200 kilometers per hour. So what is the distance traveled by fly? So we know distance is speed into time. So 200 के speed से 5 घंटा वो उड़ता रहा है. So it will travel a distance of 1000 kilometers. So the total distance traveled by the fly is 1000 kilometers. Okay, so think about such questions in this big picture terms, not in terms of individual trips. इसमें कोई doubts? Everyone understood this question? Those who want screenshot, quickly do so. Previous slide पे कुछ था ही नहीं. This one, question number 18. So this is 19A. Next, try this 19B now. Traveling at the speed of 140 kilometers per hour, let's say starting from B, and the fly is going from B point to A point and then coming back. So Okay. the next time when the fly does come back, it will come back at a distance lesser than 700 kilometers from B. Yes, every trip will go on reducing. Every trip of fly will be lesser as because the two trains are approaching each other. The So, flight but of then, the fly okay. happens along with the train's movements. So both the trains are simultaneously coming closer and closer to each other. And that is when the fly also is flying back and forth between the two trains. So every individual trip of fly will be lesser than the previous trip. So the distance traveled by fly, every trip goes on reducing. So the first trip of the fly will not be 700 kilometers. Second will be even lesser than that. Third will be even lesser than that. But are we interested in finding the distance in every trip? The answer is no. We are looking for the total distance traveled by the fly. So we know the time taken by the trains to meet is 5 hours. 5 घंटे में ट्रेन मिलेंगे तब तक वो फ्लाई तो will keep on flying back and forth between the two trains. तो 200 के स्पीड से 5 घंटे अगर वो उड़ता है तो 1000 kilometers will be the distance traveled. ठीक है. So now in 19B, again it is the same setup. Okay? Fly keeps on traveling back and forth between the two trains at the speed of 200 kilometers per hour. Now, instead of finding the total distance by the fly, we have to find the total distance traveled by the fly in the forward direction. Means what? Now, when the fly goes from A to B, train A to B जब जाता है, वो distance count करो. B to A जो return आ रहा है, उसको नहीं count करना. वापस second trip जो A to B जाएगा, वो count करो. But return जब आएगा B to A, उसको नहीं count करना है. And so on. So you only count all the forward direction trips of that are made by the fly and add that total distance. ठीक है, तो आपको वो टोटल फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना मूव किया है फ्लाई, ये आपको निकालना. So this is actually the CAT question that was asked.
The first one was just a setup for that question. So the actual cat question is this one. So you have to count the distance traveled by the fly in the forward direction. So now to find that, again you have to first find out the time taken to meet, which we know is 5 hours. ट्रेन्स को मिलने के लिए जो टाइम लगेगा वो 700 upon 140 होगा, which is 5 hours. Now, if the trains have taken 5 hours to meet, what is the distance traveled by that first train A? उसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो वो 5 घंटे में it will travel how much? So 60 into 5, 300 kilometers. So train A would have traveled 300 kilometers in those 5 hours. तो जब मीटिंग पॉइंट होगा ट्रेन्स का, लेट्स से वो यहाँ पे है, वो ट्रेन ए से 300 किलोमीटर दूर होगा. ट्रेन ए के स्टार्टिंग पॉइंट से 300 किलोमीटर दूर है. Now, where will the fly be when the trains meet? So imagine the trains are coming closer and closer to each other. The fly keeps flying back and forth between the two trains as the trains come closer. So when the trains meet at M, उस वक्त fly भी तो वहीं पे होगा. So this is where the fly ends up. Now the fly was never pushed by any of the trains. It was just keeping on flying back and forth between the trains as the trains are coming closer and closer. So now if you think in terms of the big picture, not in terms of every individual trip, in terms of big picture, we know कि fly ने start किया था train A से और उसको end करना है इस point M पे. मतलब वो 300 किलोमीटर तो उसको आगे आना ही है forward direction में. ठीक है? So fly has to go 300 kilometers in forward direction. We know the total distance that fly goes is 1000 kilometers. Okay? मतलब और 700 किलोमीटर उसको ट्रैवल करना है. 300 किलोमीटर तो फॉरवर्ड हो ही गया है और 700 किलोमीटर ट्रैवल करना है टू मेक टोटल डिस्टेंस 1000. बट अभी वो 700 किलोमीटर हैज टू बी इक्वली बैलेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फॉर टू फ्लाई टू एंड एट एम. अगर एक बार वो एम तक आ चुका है, उसके बाद इट कैन नॉट बी अहेड ऑफ दिस पॉइंट एम और बिहाइंड. Means whatever extra distance it is traveling has to be exactly equally distributed between forward and backward. So जो 1000 किलोमीटर में से 300 किलोमीटर तो हमने फॉरवर्ड लिया ही है. फ्लाई का जो टोटल डिस्टेंस है 1000, उसमें से 300 किलोमीटर तो फॉरवर्ड है ही टू रीच दैट पॉइंट एम. और फिर जो रिमेनिंग 700 किलोमीटर हो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन. ये 700 किलोमीटर जब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इट विल बी 350 किलोमीटर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड 350 किलोमीटर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन. तो फिर देन दैट फ्लाई विल एंड अप एट पॉइंट एम. सो 300 किलोमीटर फॉरवर्ड से वो एम तक पहुंच गया और वहां से फिर जो भी डिस्टेंस बाकी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में, तो वो पॉइंट एम पे रहेगा. सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द फ्लाई इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज 300 plus 350, which is 650 kilometers. That is the answer to this question. We know the total distance traveled by the fly is 1000, right? वो तो पहले एग्जांपल में हमने देखा है. फ्लाई को कुछ भी हो 1000 किलोमीटर ट्रैवल करना ही है. वो 1000 किलोमीटर्स में से ये पॉइंट एम तक को फ्लाई को पहुंचना है. वो पॉइंट एम तक पहुंचने के लिए 300 किलोमीटर तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आना ही है इन सम ट्रिप और द अदर. वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट विच ट्रिप हाउ मच इट इज ट्रैवलिंग. वो जो भी है ओवरऑल 300 किलोमीटर तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा ही टू रीच पॉइंट एम. एंड वंस द फ्लाई हैज रीच्ड पॉइंट एम, इट कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर. तो जो बचा हुआ 700 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहा है 1000 में से 300 तो फॉरवर्ड है ही. जो रिमेनिंग 700 है has to be equally balanced between forward and backward. Only then it will be at point M at the end. So 350 kilometers forward होगा, 350 kilometers backward. Again individually concept trip में कितना forward कितना backward we don't know that. We are not bothered about that. But total distance जो 1000 है
उसमें से 650 किलोमीटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। उत्सव 19B आस्क किया है, तो आपको पहले तो ये निकालना ही है 19A का आंसर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्लाई 1000 निकाल के फिर ये आंसर निकालोगे 650। मैंने वो 2 पार्ट्स में किया, आपको यही पूछा है डायरेक्टली, तो ऑफकोर्स वो आपको पहले वो 1000 तो निकालना ही पड़ेगा, एंड देन यू विल आंसर इन दिस फैशन। चलो, so those who want screenshot of this slide quickly do so. How will you distribute 349 and 351, Prathamesh? ऐसे what 3 कौन सा 349 351 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? 700 किलोमीटर जो बाकी है वो? ट्रेन ए ने जहां से स्टार्ट किया, फ्लाई भी वहीं से स्टार्ट कर रहा है, एंड जो मीटिंग पॉइंट है वो 300 किलोमीटर दूर है, ठीक है? That meeting point is 300 kilometers. So fly has to go from this point to this point forward direction में 300 किलोमीटर, और फिर जो बचा हुआ और 700 किलोमीटर उसको ट्रैवल करना है, वो 700 अगर आपने 350 351 ऐसा कुछ तो सॉरी नॉट 350 350 बट कुछ तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो विल यू रीच एट दिस पॉइंट एम इटसेल्फ? विल यू एंड एट एम? आप ही बोलो ना, ये अभी यहां तक तो आ चुका है एम तक, अभी जो बचा हुआ डिस्टेंस है, इफ यू गो 351 किलोमीटर्स फॉरवर्ड एंड कम बैक 349, विल यू बी बैक एट एम? You want to end up at M only, वो फ्लाई को M पे रहना है, it cannot be ahead of M or behind M. The only way that is possible is जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो इक्वली बैलेंस्ड होगा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में, तो ही ना। हर ट्रिप के टर्म्स में मत सोचो कौन से ट्रिप में कितना आगे गया कितना पीछे है, वी कैन नॉट डिसाइड दैट, वी आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल। ओवरऑल जो 1000 किलोमीटर है उसमें से 300 किलोमीटर फॉरवर्ड आना ही है टू रीच एम, और बचा हुआ 700 किलोमीटर हैज टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सो दैट द फ्लाई स्टेज एट एम। ठीक है, चलो, सो नाउ दैट वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ टाइम, we'll have to stop here, 6:33 हो चुका है। So next class we'll solve more number of questions. I hope everyone comes prepared now for further classes. Everyone has experienced this कि questions थोड़े difficult होते हैं, आपको थोड़ा prepare करके आना है so that we can go faster. So next class we will be doing time and distance and average mixtures allocations, AMA time and distance के questions. And both topics are challenging topics ना, time and work आज easy था, तो challenging topics है, तो अच्छा prepare करके आओ। सर बोलो। सर अभी आपने जो एक्सप्लेन किया डिस्टेंस फॉर फ्लाई का ट्रैवल का लास्ट वाला, इसमें फ्लाई ने 300 किलोमीटर ऑलरेडी ट्रैवल किया विद फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट आपने 750 को सिंप्लीफाई किया 350 टू 350, फिर वो अगर ऑलरेडी फ्लाई ट्रैवल कर चुके 300 किलोमीटर, वो 350 का सिंप्लीफिकेशन मुझे नहीं समझा। Total how much is the distance traveled by the fly that we did in 19A? 1000। Do you understand that? हाँ हाँ सर। 1000 किलोमीटर फ्लाई ने टोटल ट्रैवल किया। हाँ। अभी उसमें से कितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए आपको पूछा है। हम्म। फ्लाई को एंड कहाँ पे करना है, तो ये पॉइंट एम जो है जहां पे वो दो ट्रेन्स मिलेंगे उनके बीच में ही फ्लाई होगा एट द एंड, ठीक है? So हाँ। fly has to reach this point M. हम्म। To reach that point M, fly has to travel 300 kilometers in forward direction. I am not bothered about कौन से ट्रिप में कितना एडजस्ट किया, कैसे आगे आया कितना पीछे, I am not bothered about that.
To reach that point M, fly has to go 300 kilometers in forward direction. ये समझा? हाँ सर. एंड हमें पता है टोटल डिस्टेंस ऑफ फ्लाई ने 1000 किलोमीटर ट्रैवल किया है, मतलब 300 किलोमीटर इटसेल्फ इज नॉट इनफ, बाकी और 700 किलोमीटर उसको करना है. वो 700 किलोमीटर अभी ऐसा होना चाहिए कि फ्लाई स्टेज एट पॉइंट एम. एक बार एम पहुंचा है तो अभी एम पे ही रहना, इट कैन नॉट मूव एनीवेयर अहेड ऑफ इट और बिहाइंड इट. और वो होने के लिए जो बचा हुआ 700 किलोमीटर करना है डिस्टेंस, वो इक्वली बैलेंस होना चाहिए बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. आप जितना डिस्टेंस फॉरवर्ड जाते हो उतना ही बैकवर्ड आते हो. टोटल आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट इन इंडिविजुअल ट्रिप्स, हाउ इट इज मैनेजिंग, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट. तो वो 700 में से 350 फॉरवर्ड जाके 350 बैकवर्ड आया, मतलब वो एम पे रहेगा. हाँ सर. So total distance in forward direction will be 300 to reach that point M, and then further 350 to stay at point M. Okay sir. Okay sir. The total Thank you. overall big picture, 650 kilometers it has traveled in forward direction. How it managed in which trip, how much, we don't know. This is 19A Kanishka. Okay? So anyone wants to ask anything, you can ask. Otherwise, we are done with the session. Yes, you're all welcome. This was question number 1. Yes, Karan, क्या हुआ? देवेंद्र सर क्यों टाइप किया हुआ? You want to ask anything? You can ask. I'll go through the questions. जिसको कुछ screenshots लेने हैं तो ले लो. This was question number 1. उसके पहले ये फॉर्मूले सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के देखे हमने. So question number 1, second slide. This is question number 2. Question number 3. Second slide. And third slide. Question number 4. Second slide. Third slide. Question number 5. Second slide. Third slide. ये इंस्टॉलमेंट्स का एग्जाम्पल. Question number 6. Second slide. Time and work. Question number 7. Second slide.
Question number 8. Second slide. Question number 9. Second slide. Question number 10. Second slide. Eleven. 12. Second slide for 12. Question number 13. Second slide for 13. Fourteen. Second slide for 14. 15. Sixteen. 17. Second slide for 17. 18. 19A. 19B. Second slide for 19. ठीक है, चलो, so today we'll stop over here. Rushika, to manage that difficulty, you'll have to practice more. If you have found that after practicing you are still not efficient at questions, और प्रैक्टिस करने की जरूरत है. ट्राई स्लाइटली हायर डिफिकल्टी क्वेश्चंस. आज के जो वर्कशॉप में किए वो सब कैट के क्वेश्चंस है. इससे ज्यादा हाई लेवल कुछ होगा नहीं. ये लेवल के क्वेश्चंस आज के जो वर्कशॉप में थे वो ट्राई कर लो वैसे. ठीक है, चलो, सो टुडे विल स्टॉप हियर. यू आर ऑल वेलकम. बाय.